Good evening, everyone. Today is the fourth day of this GST conclave. After arranging for direct tax conclave for 3 days, we Amannagar, Akola, and Jalgaon branch planned for the 4 day GST conclave. And we are very much thankful to all the participants, all the speakers for voluntarily participating, as well as speakers has given their efforts to the topic and justice by giving their views, which are very much helpful in our day-to-day practice. I welcome you all on this fourth day of GST conclave. Today, as per actually today, Poddar sir, we're going to take the webinar on controversies in GST as well as recent judgments. But due to his health issue, we requested Dhruvank sir from Vadodara to give his views on this topic, and he immediately accepted our request. We are very much thankful to him for accepting our request and taking this session today. Now I request Jalesh Bhayati sir from Akola to give the introduction of our today's speaker. Thank you, Kiran sir. Sri Dhruvank Parikh is a chartered accountant, BCom, MCom. Sir have qualified chartered accountancy in the year 2012. Sir is partner in Naresh and Company since 2017, from where he has completed his articleship. Sir expertise is in indirect taxation, which include litigation, taxation advisory, audit, reporting compliance, consultation and expert opinion in case of central excise, service tax and GST search and inspection, as well as other critical aspects. In professional experience of Sir, a co-opted member of Indirect Tax and GST Committee of WIRC of ICI for the year 1920, selected as National Faculty on Goods and Service Tax by Indirect Tax Committee ICAI. Independently handled all matters in connection with indirect tax, particularly service tax, central excise level, and now GST. Managing a wide range of service, particularly in the field of excise, service tax, GST from registration to representation. Sir has expertise in drafting legal issues and attending hearing in connection with various matters and litigation connected with service tax, excise, and now GST. Requesting clients for CRM matters. Representing clients for CRM matters. Sir has independently handled many search and survey cases, including assisting client in the subsequent matters arising thereon. In case of academic front, Sir's experience, a visiting faculty for indirect taxation at Maharaja Sayajirao University, Vadodara, national faculty and speaker of ICI on topic related to indirect taxation. Every year submits 3 budget memorandum on being asked to do so by Federation of Gujarat Industries Vadodara in case of indirect taxes. Have attended the trainer program held under the Indirect Tax Committee of ICAI, an official trainer to train the official appointed by NACEN after being nominated by IDTC of ICAI. Conducted training session and orientation for student of SP University Anand and Dr. Thakurbai Patel Girls Commerce College Vadodara. Have conducted more open forum on behalf of CBIC at more than 14 locations in and around Vadodara before the introduction of GST. Imparted more than 150 lectures on GST, including lectures on GST imparted before introduction of GST. Various articles have been published in Taxman, a national-wide publication, as well as Vadodara branch of WRC of ICI. With this brief introduction, I welcome today's learned speaker, Dhruvank Parikh sir. Thank sir, you. Over to you. Thank you. So, good evening to one and all. Good evening, sir. Sir, just full window, sir, of the PPT. Yeah, first class. Okay, fine. I think
Avinash Podar sir would have been the right person to take this topic, particularly because it is associated with a matter of litigation. However, in his absence, I would try my level best to give justice to the topic allotted to me, which is recent judgments under GST. So, I would like to start with a very recent judgment in case of VKC Footsteps India Private Limited versus Union of India, given by Honorable Gujarat High Court. Everybody who is attending this session must be aware about this judgment because it is considered as one of the landmark judgment after the introduction of GST. There were various controversies which were going on, particularly on the issue of refund with respect to inverted rate structure. I am taking this as a first judgment in my today's PPT because yesterday when I had a talk with the chairman sir, he told me to take those issues which are relevant in your particular area. I am from Vadodara, so I might not be aware about the industrial issues, the particular sectors which are there, the particular problems which are being faced by the industries located in your area. But during the session, after my session, you can raise any queries, even not related to my topic. I would be pleased to answer all those queries to the extent possible. So, before addressing your queries, first of all, let me go through the landmark judgment recently from the Honorable Gujarat High Court in case of VKC Footsteps. The issue after the introduction of GST for the 3 years, for 3-year span period, with respect to input tax credit, with respect to accumulated input tax credit, the refund of accumulated input tax credit in case of inverted rate structure, बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि इनपुट का ही रिफंड मिलेगा. बहुत सारे लोग बोल रहे थे इनपुट सर्विसेज शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन व्हाइल क्लेमिंग द अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर. मैं ये इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, because we are aware that in case of various goods, in case of various services like construction, अभी तो construction में credit का कोई question नहीं है, but before 1st April 2019 there was a restriction on claiming refund of accumulated credit in case of construction industry. Right now also there are various chapters like chapter number 61, 62, 63 जहां पे बहुत सारी जगह पे restriction है कि inverted rate structure है तो भी a person is not in a position to claim refund. लेकिन जो जगह पे restriction नहीं है, if there is no specific restriction in the act which is specified by way of a notification, जहां जहां पे restriction नहीं है, the assessees are in a position to claim refund of accumulated ITC on account of inverted rate structure. We are aware that why this question of refund arises. ये refund का question arise क्यों होता है, हम सभी को पता है. The very logic of this refund is that the rate of GST on my output supplies is less than the rate of GST on my inward supplies. For example, अगर मेरे output supply GST में अगर उसका rate 12% है, and if I am in receipt of goods and services which are liable to tax at the rate of 18% and 28%, what will ultimately happen is that I will left out with some credits. I won't be in a position to utilize all the credits that I have paid on my inward supplies. तो यहाँ पे section 54 subsection 3 मुझे allow कर रहा है कि I can claim refund. जो यहाँ पे issue अभी तक था, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा opinion था, there were different views among the different experts. One view was, with respect to input services, you should not consider input services while calculating refund on this account. और एक व्यू ऐसा था कि input services should also be included while calculating the amount of refund because of this inverted rate structure. ये issue यहाँ पे settle हो गया. 24 जुलाई को एक landmark judgment मिला जहां पे one of the person who argued on behalf of the petitioner was Avinash Podar sir, obviously, जिन्होंने यहाँ पे plead किया था रिस्पेक्टेड श्रीधरन सर के साथ. तो यहाँ पे जो इश्यू था वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में था. रूल 89.5 की अगर बात करें तो रूल 89.5 में एक एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया था एंड देयर वाज अ सर्कुलर एज वेल फ्रॉम द बोर्ड. बोर्ड ने एक सर्कुलर भी इश्यू किया था और
सर्कुलर नंबर था 79/53/2018 डेटेड 31st December 2018। पर्टिकुलरली ये सर्कुलर आने के बाद ये इश्यू ज्यादा फ्लेयर अप हो गया क्योंकि द सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। इसके पहले भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज का यही व्यू था कि इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसके रीजन से होता क्या था, द assessee was left out with an ample amount of input tax credit because input services was not included while calculating the amount of refund। यहां पे इसकी वजह से, ये सर्कुलर की वजह से डिपार्टमेंट का व्यू भी एक चेंज हो गया था। बहुत सारी जगह पे डिपार्टमेंट का पहले से यही व्यू था, एज द एक्सप्लेनेशन हैज ऑलरेडी बीन इंसर्टेड इन रूल 89(5)। एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया था दैट the refund will be eligible only on the component of inputs and not input services। कैपिटल गुड्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसके बाहर है। इश्यू एक ही था, इनपुट्स आपको खाली एलिजिबल है, इनपुट सर्विसेज एलिजिबल नहीं है, और सर्कुलर में ये क्लियर कर दिया बोर्ड ने। नाउ द सर्कुलर हैज बीन चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट along with the explanation to the rule। The rule was challenged because it was contrary to the section itself। If we read section 54 subsection 3, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब ये वर्ड यूज हुआ है एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाउ कैन रूल रेस्ट्रिक्ट द amount of refund to the extent of only inputs by not including input services? So this was challenged before the Honorable High Court। The Honorable High Court, the attention of the Honorable High Court was also drawn to the fact of the Finance Act 1994, जहां पे दो sections थे, section 66 as well as section 67(1). Those who were practicing in service tax must be aware about this section and the famous landmark judgment in case of Intercontinental, जहां पे रूल 5(1) को अल्ट्रा वायरस गिन के कहा था कि रूल कैनॉट ओवरराइड द एक्ट। इट इज अ सिंपल एनालॉजी, राइट? रूल कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। सेक्शन 66 की बात करूं, सेक्शन 67(1) की बात करूं, फाइनेंस एक्ट, द अर्स्टवेल एग्जिस्टिंग लॉ सर्विस टैक्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो चार्जिंग सेक्शन था, तो चार्जिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा गया था कि कंसिडरेशन रिसीव्ड, consideration that is received with respect to provision of service। और रूल 5(1) जो वैल्यूएशन का पार्ट था, वहां पे लिखा गया इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज दैट इवन रीइंबर्समेंट वाज sought to be taxed, which was contradictory to the charging section 66 itself, right? तो इसको रूल 5(1) को भी कॉन्ट्राडिक्टरी है करके स्ट्रक डाउन किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसका भी सहारा लिया गया अभी। एंड फाइनली Honorable Gujarat High Court gave a landmark judgment that even input services should also be included because section 54(3) talks about supplies, whether of goods or services, और वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है any supplies, so it includes inputs as well as input services। Just by way of an explanation, just by way of a rule, the government cannot restrict the intention of the lawmakers, right? So एक ये landmark judgment है। I am sure I am audible to all who are present and attending this session। खाली मुझे कोई बता दो, am I audible or not? Yes, और sir, you are audible. audible ना? और Yes, मेरा yes, pace भी yes, सही sir. है, if I am not wrong, right? Yes, I'm No, not no, going no. too fast, I'm not going too slow। Yes, sir. I'm not able to make out because I'm not able to see your faces, right? yes, yes, So right. अगर कोई भी जगह पे दिक्कत लगे, कोई भी जगह पे confusion हो, you can just message me on this chat because I have opened my dialog box, right? Any confusion with respect to this judgment? Anything that you would like to add, somebody of you would like to add with respect to this judgment? Abhi, I don't know what the department would take this judgment, because I'm sure the department will definitely go to the Supreme। अभी तक कोई डिपार्टमेंट ने एक्शन नहीं लिया है इसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, लेकिन ये बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे स्टेट्स में ये इश्यू चल रहा था, बहुत सारे जुरिसडिक्शंस में ये इश्यू चल रहा था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, what about those assessees who have already filed refund and have got the refund just by including the inputs and not input services? उनके फिट का क्या?
क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ है कि एप्लीकेंट ने, असेसी ने इनपुट को ही इंक्लूड करके लिटिगेशन नहीं करने के लिए खाली इनपुट को इंक्लूड किया, इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया है. Right from the very beginning, my view was to include input services as well, so that कोई भी कल उठ के लैंडमार्क जजमेंट आए, just what we have got from Honorable गुजरात हाई कोर्ट, तो एक स्टैंड रहेगा, ट्रिब्यूनल में एक स्टैंड रहेगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास एक स्टैंड रहेगा. लेकिन जो लोगों ने खाली इनपुट को इंक्लूड करके रिफंड क्लेम कर लिया है और टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील हैज ऑलरेडी elapsed, I don't think they would be left out with any remedy. लेकिन अगर अभी जजमेंट रिसेंट आया हो, आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास से ऑर्डर अभी ही मिला हो आपको 3 महीने के पहले, 4 महीने के पहले, यू कैन ऑल्सो फाइल अ कॉन्डोनेशन एज वेल. कोविड से पहले मिला हो तो स्टिल अभी आपके पास चांस है, 31 अगस्त तक का चांस है आपके पास. यू कैन स्टिल फाइल एन अपील टेकिंग द प्ली और टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, राइट? Somebody has asked a question, sir, can't there be the stand that the word defined in law is input and not inputs? Okay, law में एक input के साथ एक word use हुआ था any, right? तो जब any word use हुआ था तो the court ने ऐसा interpret किया कि इसको input तक सीमित नहीं रख सकता legislature, right? Rule बना के you cannot restrict the refund only to the extent of inputs. It will also include input services as well, because section 54 subsection 3 is very clear, and the word used is any unutilized input tax credit, any, and that is the reason that this rule has been held as ultra virus to the main provisions of the act. Hope I am clear. Okay, moving to the next judgment. This is also one of the recent judgment in case of Material Recycling Association of India versus Union of India, again by Honorable Gujarat High Court. Tell me one thing by way of a message or by way of sharing your screen as well or your video as well. What is your actual stand on the intermediary services provided by an assessee located in India, as well as an intermediary services which is provided by a person located outside India? What is your stand? Whether GST is applicable on intermediaries who are receiving consideration and located outside India, or the intermediaries who are located in India and receiving consideration from a person located outside India. Let us go one by one. पहले हम उनकी बात करते हैं जो इंटरमीडियरी इंडिया में है और उनको फॉरेन करेंसी में कंसिडरेशन मिल रहा है. Whether that consideration is chargeable to GST in India. This is the first question. Let's say there is an intermediary. Intermediary, I'm talking about commission agents. I'm talking about the facilitators. Right? I am talking about the brokers. मैं उनकी बात कर रहा हूं जो facilitate कर रहे हैं. Somebody has written that section 13(8)(b) by virtue of this IGST is applicable. यहाँ पे हम बाद में ये भी डिस्कस करेंगे whether IGST should be levied or CGST, SGST should be levied. लेकिन अभी it is being clear from your answers that yes, GST is applicable on the intermediaries, right? Okay, fine. What about the intermediaries who are located outside India? Whether consideration paid from a person located in India to an intermediary who is located outside India be taxed in the hands of a person located in India under reverse charge mechanism? ये तो पहली बात हो गई. I agree with what you have written. Yes, yes, GST is applicable. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा IGST is applicable. इतना बोल रहा हूं yes, GST is applicable by virtue of section 13(8)(b). But what about the second scenario? जहां पे इंटरमीडियरी इंडिया से बाहर है, कमीशन एजेंट इंडिया से बाहर है और इंडिया का बंदा, इंडिया का असेसी कंसिडरेशन पे कर रहा है इंडिया से बाहर. Whether this Indian fellow is required to pay GST. Although somebody has written again, although if client is located outside India and services are consumed outside India, logically IGST should not be applicable. Okay, चलो मैं इसको और ट्विस्ट कर रहा हूं थोड़ा. मेरा जो मुझे कंसिडरेशन दे रहा है वो बाहर है, इंटरमीडियरी इंडिया में है, लेकिन जहां पे जिसके बीच में फैसिलिटी दी, इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे थे, इंडिया का बंदा था जिसको गुड्स प्रोक्योर कर रहा है, राइट? So the person who is procuring goods is located in India
and the person who is supplying goods is located outside India, and I am an intermediary who is receiving consideration from a person located outside India, what would be the case in this scenario? Whether GST is applicable or not? Are you getting what I want to say? Hello? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. नहीं, वो कुछ बात कर. खुरिया सर म्यूट कीजिए Sir, अपने I आप. have muted him. Sir, you continue. Sir, you just give a brief with example what you are trying to explain, so that A, B Okay. in that matter, so that Okay. easily everyone will. Okay. Mr. A is a person who wants to supply goods and located in US. Mr. B is a person who wants to purchase those goods and located in India. And Mr. C is an intermediary who facilitates the supply of goods from Mr. A to Mr. B. Now this Mr. C, the intermediary, is located in India, and he is in receipt of consideration from Mr. A, who is located outside India. Whether GST is applicable on this transaction or not. Okay, किसी ने Yes, लिखा sir. है not applicable, कोई बोल रहा है yes, C will charge GST. ओके और एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं थोड़ा इसको आगे बढ़ते हुए कि जो जीएसटी सी चार्ज कर रहा है वेदर दैट amount of GST is available as input tax credit in the hands of Mr. C, particularly if Mr. A doesn't agree to pay GST, because Mr. A is located in US. He has nothing to do with Indian GST, right? So he may agree or he might not agree with the payment of GST to Mr. C. Yes, sir. So what about input tax credit in the hands of Mr. C? जो GST उसने पे किया as an intermediary in India, whether he would be eligible to avail benefit of input tax credit. So यहाँ पे बहुत सारे confusion थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2014 से सर्विस टैक्स regime से ये क्लियर किया गया है कि if the intermediary is located in India, he is liable to pay GST, because as per section 13(8)(b), the place of supply will be considered as India, because the place of supply as per this section is the place where the supplier of service is located. An intermediary, as the intermediary is located in India, the place of supply will also be considered as India. तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट के सामने ये चैलेंज किया गया था कि when GST is a destination based consumption tax, ultimately the services are consumed by a person who is located outside India, that is Mr. A in our example, right? So being the destination based consumption tax, how can GST be charged on this transaction? The Honorable Gujarat High Court observed that even though the consideration is receivable from Mr. A, and even though the agreement is with Mr. A as far as intermediary is concerned, Mr. C is indirectly providing services to Mr. A as well as Mr. B, because he is only acting as a facilitator between two people, right? And government has got all the rights to decide the place of supply. It is not contrary to any of the articles of Constitution of India. यहाँ पे आर्टिकल को वायोलेट कर रहा है ऐसा कुछ कहा गया था, राइट? लेकिन गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया इट इज नॉट वायोलेटिव टू एनी ऑफ द आर्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और जो प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट डिटरमाइन करने का पावर मिला है, गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज दोस पावर्स एंड गवर्नमेंट कैन डिसाइड द प्लेस ऑफ सप्लाई. और यहाँ पे इंटरमीडिएरी के केस में भी जो डिसाइड किया गया है, द प्लेस ऑफ सप्लायर, दैट इज परफेक्ट एंड द पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी. As far as which GST is required to be paid, ये भी बहुत सारा confusion था. If you read between the lines of this judgment, para 61, para 62, para 63, ये सब आप पढ़ोगे तो वहां पे बहुत ही क्लियर कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने, as the place of supply is the place where the intermediary is located, ideally what should be charged is CGST and SGST and not IGST. भले IGST में इसलिए है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन करने के लिए पावर्स दिए गए, that is given in the IGST Act, and by virtue of this the government has decided that what would be the place of supply in case of different services, and by virtue of this
the place of supply is the place where the intermediary is located. So if I'm a person registered in Vadodara, right, my location is also Vadodara, Gujarat, and my place of supply will also be considered as Gujarat. And ideally on this transaction, what is supposed to be paid is CGST and SGST and not IGST. ये भी बहुत कंफ्यूजन था लोगों के मन में कि IGST पे करवाना है, CGST SGST पे करवाना है. गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया. So it doesn't matter. अगर आपने ऑलरेडी IGST डिस्चार्ज भी कर दिया है तो ये भी मैटर नहीं करता. The reason being, it is very clear in the IGST Act that if by mistake IGST is paid instead of CGST or SGST, interest won't be charged. You can pay CGST, SGST and claim refund of wrongly paid IGST. The same would be applicable in case of vice versa transaction as well. अगर आपको refund भी claim नहीं करना है government के पास जाके by exercising the powers given to the assessee under section 54, what assessee can do is assessee can simply adjust the excess amount of IGST paid in the subsequent GSTR 3B to be filed as per the provisions contained in or as per the guidelines given in circular number 26 by 2017 dated 29th of December 2017, right? तो IGST उतना कम कर दो, CGST SGST उतना बढ़ा दो. Just go through this judgment. और एक दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा कंफ्यूजन लोगों के मन में है, जो GST भरा क्या उसका क्रेडिट मुझे मिल सकता है? Let me clarify, this is not the GST that the intermediary is paying under reverse charge. This is the GST that intermediary is paying under forward charge. And when something is paid under forward charge, the ITC of the same cannot be availed by the assessee. So it is a deal between the supplier of service and the recipient whether to charge GST from the recipient or not, right? ये contract determine करेगा. Ideally, the supplier should include the element of GST while negotiating the prices with the recipient of service who is located outside India. Okay, so यहाँ पे एक और plea भी रखा गया था 12AA. An entry is inserted in notification number 20 by 2019. लेकिन ये जो notification है, it talks about a case when intermediary is located in India and the person supplying goods as well as the person in receipt of goods or services both are located outside India. अगर जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स सप्लाई कर रहा है और जो गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, A and B in our example, if both are located outside India and C, the intermediary is located in India, in that case, by virtue of this notification, by virtue of this specific exemption being granted, no GST would be applicable, right? So this is a particular exemption being given. Okay, the next judgment that I would like to highlight upon is Safari Retreat Private Limited versus Chief Commissioner of CGST by Honorable Orissa High Court. Okay, अगर मैं ये जजमेंट की बात करूं तो ये जजमेंट को ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एडमिटेड कि ठीक है इसका हियरिंग अभी होना पेंडिंग है. What is covered in this judgment is it talks about the input tax credit with respect to goods and services used for construction. What about goods and services used for construction? Whether am I eligible to avail the benefit of those, the ITC with respect to GST paid on goods and services used for construction on my own account? क्या मुझे उसका ITC मिल सकता है वैसे गुड्स और सर्विसेज का जो मैं कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा हूं, मेरे खुद के लिए मैं अगर बिल्डिंग बना रहा हूं? इट इज वेरी क्लियर, राइट? सेक्शन 17.5D, सेक्शन 17.5D इज वेरी क्लियर. C&D वेरी क्लियर. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा गया है, क्लियरली एक्ट में प्रोविजन है. द सेम वर्ड्स, द सिमिलर वर्ड्स, द सिमिलर इंटेंशन वाज देयर इवन अंडर द सर्विस टैक्स regime, that I am not eligible to avail benefit of input tax credit, particularly with respect to those goods and services which are used in construction or works contract on my own account, even though it is used in the course or furtherance of my business. अगर मैं खुद के लिए कोई प्रीमाइसेस बनवा रहा हूं, अगर मैं खुद के लिए भी एक ऑफिस परचेज कर रहा हूं, अगर सामने वाला बंदा GST चार्ज कर रहा है, I am not eligible to avail benefit of input tax credit. But what about a case
where I am going to let out this building and I am going to earn rental income, जहां पे मैं ये बिल्डिंग को आगे रेंट पे देने वाला हूं, ये प्रीमाइसेस को आगे रेंट पे देने वाला हूं. What would be the case? What about this input tax credits? Am I eligible to avail benefit of input tax credit? से ऐसे बहुत सारे जगह पे क्वेश्चंस आते होंगे, राइट? मैंने फैक्ट्री बनवाया, फैक्ट्री का एक पोर्शन मैं यूज नहीं करने वाला हूं, फैक्ट्री का एक पोर्शन आई एम गोइंग टू यूज फॉर माय ओन प्रोडक्शन. मेरे पास बहुत जगह थी तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन जो मैं खुद के लिए यूज नहीं करने वाला हूं, आगे मैं रेंट पे देने वाला हूं. Right, where I'm going to earn rental income, where I'm going to charge GST on rental income, because leasing, renting, ये सभी जगह पे I'm liable to pay GST. किसी ने क्वेश्चन पूछा है, is if a tour operator sitting in foreign arranges tour for India and charges commission? Okay, I'm coming to this. Similar problem in case of warehouses. Yes, सही है. किसी ने लिखा है कि ऐसा ही प्रॉब्लम वेयरहाउस के केस में भी होता है. ओके, ये जजमेंट को चैलेंज किया गया है, डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने. वी डोंट नो द फेट ऑफ दिस जजमेंट, बट राइट नाउ टू सिक्योर योरसेल्फ, अगर आपको सिक्योर करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? अगर आप आगे रेंट पे देने वाले हो तो ये जजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स टू रेस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट on the goods and services used for construction, particularly when it is going to be used for giving it on rent in the course or furtherance of business. नहीं तो बहुत ही नैरो डाउन हो जाएगा एक्ट का इंटेंशन और डबल टैक्सेशन हो जाएगा, ऐसा कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है. But we don't know the fate of this judgment, but till the time it is being heard by the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, and a judgment is to be delivered by the Honorable Supreme Court. अगर आपने अभी क्रेडिट नहीं लिया वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में, जो आप आगे रेंट पे देने वाले हो, you will lose the right. 4 साल बाद अगर जजमेंट आया, 5 साल बाद अगर जजमेंट आया, तो what will happen? ये बहुत, मैं इसके ऊपर आने वाला था सर. कैन वी टेक क्रेडिट एंड नॉट यूटिलाइज? इफ वी लुक टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50, विच इज पहले भी अगर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक्सरसाइज में भी पहले एक प्रोविजन था, टेकन, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड. बाद में सबसे पहले था अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, बीच में गवर्नमेंट ने रखा अवेल्ड और यूटिलाइज, और बाद में फिर से उसको अमेंड किया अवेल्ड और यूटिलाइज्ड. अगर हम सेक्शन 50 भी देखें जीएसटी में, तो भी द वर्ड्स यूज्ड इन द एक्ट इज टेकन और यूटिलाइज्ड. और मतलब अगर आपने गलती से ले भी लिया है, इवन दो यू हैव नॉट यूज्ड द क्रेडिट, व्हाट विल हैपन इज the interest will be charged as per the provisions of section 50 subsection 3. लेकिन what you can do is, anyways there बहुत सारे हमारे पास precedents available है. One of the precedent is available in case of ONGC by Honorable Gujarat High Court once again, wherein the Honorable Gujarat High Court said that if the assessee has not utilized the credit, खाली avail करके उसको रख दिया था, तो उससे कहाँ benefit लिया है भाई? If he has not availed the benefit of that credit by not utilizing the same, the department cannot charge interest, neither interest nor penalty. ऐसा judgment आया था. GST is a new law. इसका पता नहीं है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट अवेलेबल है. अगर आपने क्रेडिट छोड़ दिया 5 साल बाद, 6 साल बाद, अगर गुजरात हाई कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है इन फेवर ऑफ असेसीज, you will lose the right to claim credit. The same thing also happened with respect to rule 2L, right? जहां पे बहुत सारे कोर्ट ने कहा था कि कमीशन का क्रेडिट नहीं मिलता. गुजरात हाई कोर्ट का फेमस केस लॉ था विद रिस्पेक्ट टू कैडिला, कि नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज यूज्ड बियॉन्ड प्लेस ऑफ रिमूवल. जिन लोगों ने क्रेडिट नहीं लिया वो लोग का क्रेडिट गया, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट मिलेगा. तो जहां पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, असेसी को एक बार, इट इज आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द असेसीज दैट इट इज कंट्रोवर्शियल. बट राइट नाउ वी आर हैविंग अ सपोर्टिंग जजमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट. इट इज
he who has to say whether to avail the credit or not. उनको repercussions भी हमें समझाना पड़ेगा. The repercussion might be the levy of interest, might be the levy of penalty, लेकिन हम उसको लेके यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी फेट नहीं पता है कि यूज नहीं किया, कल उठ के ऐसा जजमेंट आया कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, और वर्ड नहीं हो सकता, एंड ही हो सकता है, etc. So right now what you can do is you may take credit on a risk by taking plea of this judgment, right? Okay, the next case law which I would like to discuss. Okay, sir, in Commercial Steel Engineering Corporation it was decided that interest, I agree, but even we don't know the fit of that judgment as well. बहुत सारे कोर्ट ने कहा है कि interest will not be applicable if credit is not utilized, and that is the reason that I am reiterating that you can ask your assessee and you can inform. SLP अभी डिपार्टमेंट ने फाइल नहीं किया है, लेकिन डिपार्टमेंट का विद कॉन्डोनेशन डिपार्टमेंट कैन स्टिल फाइल एन SLP बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट? कॉन्ट्ररी जजमेंट भी नहीं है, आई अग्री सर, अभी कोई कॉन्ट्ररी जजमेंट नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू यू कैन एनीवेज टेक द क्रेडिट एंड नॉट यूटिलाइज टिल द टाइम decision is received from the honorable Supreme Court. Okay, next judgment that I would like to focus on is with respect to Shabnam Petrophils Private Limited versus Union of India. ऐसा बहुत सारे केसेस में आज तक प्रेसिडेंट्स भी है हमारे पास, और ऐसे बहुत सारे केसेस में एक्साइज रिजीम में एज वेल एज इन फाइनेंस एक्ट वी हैव सीन दैट डिपार्टमेंट used to dispute on a legitimate input tax credit or SENVAT credit taken by the assessee by virtue if an amendment is taking place or has taken place. से क्या होता है, मैं particularly आपको एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दूं. The matter has already been decided by Honorable Gujarat High Court in case of Finance Act. You must be aware about Rule 6.3 of SENVAT Credit Rules 2004, which was similarly drafted in the manner where we are having Rule 42 and Rule 43 right now in GST regime. I am talking about common credits, right? मैं common credits की बात कर रहा हूँ. If input tax credit, if the goods or services are commonly used for the purpose of exempted supplies as well as taxable supplies, what happens is the applicant, or sorry, the assessee is required to reverse common credit as per the provisions of section 17 subsection 2 read with Rule 42 and Rule 43 as per the formula given in Rule 42 and Rule 43. ऐसा ही कुछ रूल 6 सब रूल 3 में सेनवेट क्रेडिट में डिफाइंड था, ऐसा ही कुछ लिखा गया था. तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने डिस्प्यूट क्रिएट किया था कि फॉर एग्जांपल अ बिल्डर हैज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया सर्विस टैक्स रिजिम में, और आज भी शेड्यूल 2 में एंट्री नंबर 5 बी कवर्स दिस क्लॉज कि अगर मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, शेड्यूल 3 आल्सो cause this activity, अगर मुझे completion certificate मिल गया है and if I receive consideration towards sale of a building, a commercial construction, a residential construction, I am not liable to pay GST because it would be considered as sale of immovable property, right? एक बार completion certificate आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने ये dispute क्रिएट किया था that you have already utilized the input tax credit pertaining to goods and services that you have used in the entire construction. Let's say 100 project की स्कीम है, 100 flats की स्कीम है, यहाँ पे 50 flats are already sold before the receipt of completion certificate, so service tax must have been paid. Right now GST must have been paid on those 50 flats. Now what happens is जो बाकी के 50 flats रहे वो completion के बाद अगर मैं sell कर रहा हूं तो वहां पे I am not going to pay GST. And in the service tax regime, I must not have paid service tax on this on those 50 flats. तो डिपार्टमेंट का ये कंटेंशन था फाइनेंस एक्ट में कि आपने क्रेडिट जो लिया है गुड्स और सर्विसेज के केस में वो तो पूरे 100 फ्लैट्स के रिस्पेक्ट में ले लिया है. So proportionately, you are supposed to reverse the SENVAT credit. The Honorable Ahmedabad Sestat as well as the Honorable Gujarat High Court ruled that once SENVAT is legitimately availed by the assessee, the department
department cannot ask the assessee to reverse the send back credit. लेकिन इसीलिए ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अभी जीएसटी रिजीम में इसके लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है, तब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर एज वेल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल, कि 1 अगस्त 2018 को वी हैव रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन सेइंग दैट आज तक की जो भी क्रेडिट है 31 जुलाई 2018 तक की जो भी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगी, और उसके बाद 1 अगस्त के बाद अगर आपको क्रेडिट मिल रही है तो दैट वुड बी एलिजिबल फॉर taking benefit of refund of accumulated input tax credit in case of inverted rate structure. इसको भी चैलेंज किया गया कि सेक्शन में कोई जगह पे गवर्नमेंट को सेक्शन 54(3) में ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि the credit which is lying to the assessee and validly taken by the assessee, तो गवर्नमेंट बोले कि उसको रिवर्स कर दो। The same was challenged before the Honorable Gujarat High Court, notification 20/2018 dated 26th July as well as circular 56/30/2018। ये दोनों को चैलेंज किया गया और फाइनली गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि the amount of credit lying to the assessee up to 31st July 2018 would not lapse। भले नोटिफिकेशन में लिखा गया हो कि वो लैप्स हो जाएगी, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस जजमेंट यू कैन टेक अ प्ले कि वो क्रेडिट लैप्स नहीं होगी। अगर आपने ऑलरेडी वो रिवर्स किया है तो यू कैन अगेन टेक दिस क्रेडिट, बिकॉज पहली बार अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो जो टाइम दिया गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में, that would apply. It would not apply in case of retaking the credit which has been reversed by you by whatever reasons, right? So this is again a landmark judgment of Honorable Gujarat High Court. Moving next to again a judgment from Honorable Gujarat High Court in case of Amit Cotton Industries versus Principal Commissioner of Customs. यहाँ पे क्या हुआ था, आज भी अगर आपको रिफंड का कोई इश्यू है, से व्हाट हैपेंस इज बहुत सारी जगह पे पैन इंडिया ऐसे इश्यूज आए हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सामने, असेसीज ने फेस किए हैं दैट द रिफंड्स आर बीइंग स्टक, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया, राइट, इट इज एज गुड एज यू फाइल्ड द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड व्हेन इट इज एन एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है कि आप रिफंड क्लेम कर रहे हो अंडर एनी अदर कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट इज विथहोल्डिंग योर रिफंड्स, डिपार्टमेंट इज नॉट गिविंग यू रिफंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, मैं जजमेंट पे बाद पे आऊंगा। अगर 60 डेज में मुझे रिफंड नहीं मिल रहा है, am I eligible to claim the benefit of interest? Am I eligible to claim interest from the department? As per the law, yes. Am I supposed to make a separate application for interest? Interest के लिए क्या मुझे एक separate application करनी पड़ेगी? Whether I am supposed to challenge the order passed by the adjudicating authority, that refund order passed by the adjudicating authority, yes or no? क्योंकि क्या होता है, हम वेट करते हैं डिपार्टमेंट कुछ करेगा, 60 डेज हो गए, 90 डेज हो गए, 150 डेज हो गए, फिर असेसी में बोलता है आके कि प्लीज डू समथिंग फॉर माय रिफंड, देन वी आल्सो अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनली डिसबर्सेस द रिफंड। तो रिफंड के बहुत सारे इश्यूज पैन इंडिया होते रहते हैं, राइट। व्हाट इज योर स्टैंड? हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं मांगते, क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर रिलेशंस विद द डिपार्टमेंटल ऑफिसर। हमें एक असेसी का नहीं देखना है, हमें बहुत सारे असेसीज का देखना है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी विल नॉट क्रिएट अ डिस्प्यूट विद द डिपार्टमेंट। इंटरेस्ट, जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है ना, हम चुप बैठ जाते हैं, भाई नहीं चाहिए, चलो चलेगा इंटरेस्ट। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑल्सो इंसिस्ट्स टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के भाई यार इंटरेस्ट छोड़ो ना, इंटरेस्ट क्यों मांग रहे हो? अगर आप इंटरेस्ट मांगोगे, मेरे के ऊपर क्वेश्चन आएगा एजी ऑडिट में कि क्यों इंटरेस्ट देना पड़ा, व्हाई आई हैव नॉट सैंक्शनड माय रिफंड, योर रिफंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर कोई डेफिशिएंसी डिपार्टमेंट रेज नहीं करता, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इश्यू नहीं करता, then why are we not claiming the amount of eligible interest if the refund is disbursed after 60 days from the date of filing the refund application? Whether that interest is automatic या कोई application करनी पड़ेगी। See, कई बार क्या होता है पता है,
सर्विस टैक्स रिजीम में भी मैंने देखा है, सेंट्रल एक्साइज रिजीम में भी देखा है, और आज जीएसटी में विटनेस कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट हमारे पास एक लेटर ले लेता है दैट वी विल नॉट क्लेम इंटरेस्ट, यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, बट वेदर दैट लेटर simply a letter is being given from our side, an undertaking is given from our side that we would not claim interest from the department, whether it is a sufficient letter or an undertaking from the assessor's side for not granting interest by the department. ऐसे भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स अवेलेबल है दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑटोमेटिक, इंटरेस्ट हमेशा ऑटोमेटिक है, आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद भी यू कैन क्लेम इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑटोमेटिक, सिंपली बाय गिविंग एन अंडरटेकिंग इंटरेस्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेयर जीएसटी रेट ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज 5%, client has taken the services of Amazon and other e-commerce on GST is paid at the rate of 18. Definitely see chapter number 61, 62, 63 बहुत सारी जगह पे restriction है, you cannot claim refund on account of inverted duty structure, लेकिन अगर आप वो specified restricted category में अगर आप fall नहीं हो रहे हो, you can definitely go for refund, you can definitely go for refund, right? जहां पर restriction नहीं है आप जा सकते हो, और ये सर्विसेज का तो डेफिनेटली आप रिफंड मांग सकते हो बिकॉज गुजरात हाईकोर्ट ने बोल दिया है सर्विसेज आर आल्सो एलिजिबल, सो यस डेफिनेटली यू कैन क्लेम रिफंड इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड इन बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, कमिंग बैक टू दिस जजमेंट, ये तो हुई इंटरेस्ट की बात। कमिंग टू दिस जजमेंट, यहां पे असेसी ने एक्सेस ड्रॉबैक मांग लिया। See, up to October 2017, October 17 के बाद तो ये इश्यू ही खत्म हो गया। Now going forward there is only one rate of drawback, लेकिन October 17 से पहले there were two rates of drawback, one at higher rate and one at lower rate. अगर आप higher rate से drawback claim कर रहे हो तो you cannot claim refund और ये सब restrictions है। गुजरात हाईकोर्ट के सामने जो चैलेंज किया गया था इश्यू वो था कि अगर मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट में टैक्स भरा है, दैट टैक्स वाज हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट, आईजीएसटी व्हिच वाज पेड बाय द असेसी वाज हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द ड्रॉबैक वाज क्लेम्ड ऑन अ हायर रेट। भले मैंने हायर रेट पे ड्रॉबैक क्लेम कर लिया हो, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा रूल 96 की अगर बात करें, पर्टिकुलर रूल 96(4), देयर आर ओनली टू रेस्ट्रिक्शंस, दो ही रेस्ट्रिक्शन है जब असेसी का रिफंड रोका जाए। सर अगर आप सेक्शन की बात कर रहे हो, सेक्शन 54(3) ही आपको कोट करना है, लेकिन आप जब आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा डिपार्टमेंट की ओर से, व्हाट यू कैन कोट इज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस जजमेंट, आप जजमेंट का हेल्प ले सकते हो, जहां पे बोला गया है रूल 89(5) इज कॉन्ट्राडिक्टरी, द एक्सप्लेनेशन व्हिच इज इंसर्टेड इन रूल 89(5) इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू सेक्शन 54(3) which talks about a refund of inverted rate structure, right? Okay, so coming back to my original judgment which we were talking about, अगर मैंने higher rate से drawback claim कर लिया है, वो ground पे मेरे IGST का claim डिपार्टमेंट रोक नहीं सकता, डिपार्टमेंट cannot hold my IGST amount। दो ही circumstances में रोक सकता है, if the customs has received an application, if the customs has received an order from my jurisdictional commissioner that refund should be withheld, और मेरे कोई पेंडिंग ड्यूज है गवर्नमेंट के सामने, मुझे कुछ भरना बाकी है, राइट? पेंडिंग ड्यूज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंफर्म्ड पेंडिंग ड्यूज, कोई अपील पेंडिंग हो उसको कंफर्म ड्यूज नहीं बोलेंगे। यही दो केसेस में माय आईजीएसटी पेड बाय मी नीड्स टू बी विथहेल्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे कोई भी पिटिशनर ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स रखे, गुजरात हाईकोर्ट ने सभी आर्गुमेंट्स को क्वेश्चन करके कहा 7% इंटरेस्ट के साथ आप आईजीएसटी अमाउंट जो असेसी ने भरा है वो वापस दें। असेसी ने ये भी कहा कि मैंने हायर रेट से ड्रॉबैक दे दिया था, क्लेम कर लिया था, आई अग्री, बट आई डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू रिफंड द हायर ड्रॉबैक क्लेम्ड बाय मी। मुझे वापस करना है, मैं एग्री हूं, लेकिन मैं कैसे वापस करूं उसको, क्योंकि वहां पे जो बेनिफिट लिया था दैट वाज फार फार लेस एज कंपेयर टू आईजीएसटी व्हिच वाज पेड बाय मी। सो जो एक्सेस ड्रॉबैक है, एक लोअर रेट से फॉर एग्जांपल 2% मिल रहा था, हायर रेट पे मैंने 4% मांग लिया, तो 2% मैं वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन देयर इज नो मैकेनिज्म अवेलेबल इन द एक्ट
गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया और कहा द अमाउंट शुड बी the amount of IGST should not be withheld. It should be given back to the assessee by deducting that excess amount of drawback with a simple interest of 7%. एक्ट में कोई जगह पे 7% नहीं है, लेकिन अगर आपका भी IGST कोई रीजन से स्टक हो गया है, what you can do is you can simply approach your jurisdictional adjudicating authority and you can claim interest on that amount as well at the rate of 6%. Okay, जो नेक्स्ट जजमेंट है, ये सब हाई कोर्ट्स के जजमेंट पहले मैंने डिस्कस किए. आई डोंट वांट टू एंटर इनटू मोर कंट्रोवर्सीज एंड डिस्कस द जजमेंट गिवन बाय AAR एंड AAR, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ जजमेंट्स है वो मैं डिस्कस श्योर करूंगा AAR एज वेल एज AAR के जजमेंट. एक है IMF कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जहां पे AAR राजस्थान ने एक जजमेंट दिया है. यहाँ पे भी जब GST एक्ट नया आया तब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी. The controversies which prevailed around with respect to input tax credit was whether I can claim input tax credit of GST, CGST and SGST, particularly CGST and SGST paid in another state. ये ज्यादातर क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आता है, wherein the place of supply with respect to immovable property is the place where the immovable property is located. The place of supplier is also in that particular state. Let's say आज कोई होटल चला रहा है, गोवा में कोई होटल चला रहा है, तो the place of supplier will also be Goa, and the place of supply will also be Goa because the immovable property is also located in Goa. Now what happens is, if a person from Maharashtra goes and avails the services of that hotelier who is located in Goa, the moot question which arises is whether the input tax credit is available to the unit registered in Maharashtra. If we talk about one tax, one nation, one market, it is the issue between the state government and the central government. It is not the issue of the assessee. However, the government has tried to curtail this or to stop the smooth flow of this input tax credit to other state. IGST अगर चार्ज किया है तो मिलेगा, लेकिन immovable property के केस में the person cannot charge IGST. That person is compulsorily required to charge CGST and SGST of that particular state. And that is the reason that this applicant approached the Honorable AAR Rajasthan, wherein this issue was raised, whether I can claim CGST and SGST of another state in my state where I am registered. So the AAR said, that AAR held that I am not eligible to avail input tax credit of CGST and SGST of another state. ये issue state और center का है, तो भी the assessee is restricted to avail benefit of input tax credit pertaining to CGST and SGST paid in some other states. That is why I have taken this judgment. मूविंग नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, AAR का जजमेंट है, क्वालिटी मोबाइक्स प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका AAR का जजमेंट है. सी आज भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट. देयर आर वेरियस circulars given by government on this particular issue of discount, passing on the benefit of discount. Recently we have also faced an issue from DGGI, that is the investigating agency, the intelligence, with respect to discount received by the assessee. Okay, what is your stand on discount received by assessee? Whether discount received by an assessee is liable to GST, considering the same in the nature of supply as envisaged in section 7 subsection 1 of CGST Act. क्या जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है सामने वाले के पास से, उसको मैं सप्लाई गिनूंगा? And will I be liable to pay GST on the discount received by me? See, what happens is, particularly I am talking about financial credit notes. Yes sir, you are right, it depends on pre-agreed discount or post sale discount. लेकिन मैं यहाँ पे सप्लायर के एंड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसिपिएंट के एंड से बात कर रहा हूँ. यू आर टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर. अगर पहले से अग्रीड है डिस्काउंट, तो व्हाट विल हैपन इज the supplier will be entitled, the supplier will be eligible to reduce the liability of GST. वहां पे supplier GST की liability reduce कर पाएगा, considering the provisions given in section 34 of CGST Act, right? लेकिन अगर प्री अग्रीड डिस्काउंट नहीं है,
पहले से तय नहीं है कि आई एम गोइंग टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ दिस डिस्काउंट, आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू रिड्यूस माय लायबिलिटी, और वो भी लायबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा जब सामने वाला रिसिपिएंट इज गोइंग टू reduce the benefit of input tax credit that he has already availed on my invoice. So यहाँ पे in absence of mechanism of GSTR2 and GSTR3, it is very difficult for the supplier, even in case of this pre-agreed discount, it is very difficult on the part of supplier to determine whether my recipient has reversed the benefit of input tax credit or not. How will you justify? क्योंकि ये condition जो act में है वो क्या है, मैं कब मेरी liability reduce कर सकता हूँ, जब सामने वाला रिसिपिएंट उतना एक्सटेंड तक उसका आईटीसी रिड्यूस कर रहा हो. But in absence of GSTR2 and GSTR3, how will I ascertain that my recipient has reversed the benefit of input tax credit? In no sense I would be in a position to justify. So the normal course of practice would be, whenever it is a case of pre-agreed discount and I'm passing on the benefit of discount by reducing my liability of GST, what we advise our client is to take a simple confirmation from the recipient of supply, either on mail, to that they have already reversed the benefit of input tax credit that they have availed on my original invoice, which would be a sufficient documentary evidence available to the supplier at the time of assessment or audit. नहीं तो क्या होगा, अगर उसने नहीं किया है, आईटीसी रिड्यूस नहीं किया है, why should I reduce my liability of GST? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा. How can I reduce my liability of GST? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा. अगर लिटिगेशन में नहीं फंसना है, सिंपली एक डिक्लेरेशन ले लो, सिंपली एक मेल ले लो कि मैंने ये आईटीसी रिवर्स किया है, because I have raised a credit note by reducing my liability. अगर पोस्ट सेल डिस्काउंट है, पहले से अग्रीड नहीं है टर्म्स, ऑब्वियसली आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू रिड्यूस माय लायबिलिटी ऑफ जीएसटी. लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं मेरी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, whether the recipient would be in a position to whether the recipient would be liable to pay GST on that transaction or not. What would be your stand? I am talking about the financial credit notes. मैं financial credit notes की बात कर रहा हूं यहाँ पे. What would be the fate of that discount in the hands of the recipient in case of financial credit notes? So यहाँ पे दो questions arise होते हैं financial credit notes के केस में. डिस्काउंट के केस में अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, डिपार्टमेंट हमेशा यही बोलेगा कि ये इंसेंटिव के नेचर का है एंड जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. Particularly, it happens particularly in case of dealer agreement with the manufacturer, dealers agreement with the manufacturer, wherein the department is behind those dealers and asking the dealers to pay GST on these transactions. जो आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट नहीं है, ये इंसेंटिव है, ये टारगेट के साथ लिंक्ड है, तो यू पे जीएसटी. ये एक फेवरेबल जजमेंट है क्वालिटी मोबाइल्स के केस में. वॉल्यूम डिस्काउंट हो, इंसेंटिव भले हो, एक बार ऑलरेडी जीएसटी भर दिया है तो डिस्काउंट के नाम से मिला, इंसेंटिव के नाम से मिला, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पास ऑन की गई है, सो रिसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन. इट इज अगेन अ वेलकम जजमेंट फ्रॉम AAR के कुछ ही ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पे हम कहते हैं कि इट इज अ वेलकम जजमेंट फ्रॉम AAR, बिकॉज यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो इट इज very risky to approach this authority, AAR or AAR. The reason being, both the officers or both the persons presiding the bench of AAR or AAR belongs to the department, right? तो ऐसे केसेस में जहां पे आपको डाउट लग रहा है, जहां पे you are not sure about the applicability of GST, you are not sure about the applicability of input tax credit, what I suggest is you pay GST on that transaction and claim refund from department. क्या होगा? Adjudicating authority will deny, appellate authority might deny, but there is a tribunal, there is going to be a tribunal wherein a judicial member will preside along with the technical member and will decide the fate of your case. But I personally insist not to approach the AAR or the honorable AAR. इससे बेटर है आप एक बार पे कर दो अगर आप श्योर नहीं हो,
और उसके बाद लिटिगेशन क्रिएट करो डिपार्टमेंट के साथ, डिस्प्यूट क्रिएट करो, you file a refund application and claim for the refund by saying that मुझसे गलती हो गई जीएसटी भरने में. अगर आपके फेवर में जजमेंट आ गया, ठीक है, वहीं पे खत्म हो गया. नहीं हुआ, approach the tribunal, approach the appellate authority and claim justice from those appellate authorities, right? ओके एक दूसरा भी क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट इज इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, इफ आई पे द एंटायर कंसिडरेशन टू माय सप्लायर, अगर मैं पूरा कंसिडरेशन में सप्लायर को पे कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन, वेदर आई एम लायबल टू रिवर्स द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स. वेबिनार चाले छे. Whether I am liable to reverse the benefit of input tax credit on the financial credit notes that I have received, particularly if the supplier has not reduced the benefit of the supplier has not reduced the GST liability. The answer would be, if you look at the circulars issued by the government ने बहुत ही क्लियर कर दिया है यहाँ पे that I am not supposed to reverse the benefit of input tax credit when my supplier has not reduced his liability pertaining to GST by issuing the credit notes, right? तो यहाँ पे तीन issues clear होते हैं by virtue of this judgment and the circulars issued by government. हालांकि एक circular तो withdraw भी कर लिया था, being inconsistent with the provisions of the act. I am moving to the next judgment, the judgment in case of Alcon Consulting Engineers India Private Limited, again by AAR Karnataka. यहाँ पे ये जजमेंट आने के बाद बहुत सारा chaos create हो गया था across India, because by virtue of this judgment, what was particularly held in this judgment was that the company would be liable to pay GST under reverse charge basis on the director's remuneration paid. Now that was not logical, particularly because we have witnessed the Finance Act 1994 as well. We have witnessed various decisions from various tribunals as well, various high courts as well in the earlier regime. और यहाँ पे AAR ने कह दिया कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी का लायबिलिटी आएगा कंपनी का. तो पूरे इंडिया में chaos हो गया था, and to remove the chaos, the department came out with a circular, the board came out with a circular. I have also mentioned the circular number 140 by 10 by 2020. Immediately the department clarified the situation by holding that in case the TDS is deducted under Income Tax Act 1961, if under 192, section 192, it would be treated as a salary. And if the consideration is given to the director, and if the amount is deducted under section 194, it would not be treated as a remuneration paid, and the company would be liable to pay GST under reverse charge mechanism basis. तो ये बहुत ही वेलकम वेलकम सर्कुलर था बोर्ड के एंड से, क्योंकि इमीडिएटली बोर्ड ने एक्शन लेके सर्कुलर इशू कर दिया था, नहीं तो पूरे इंडिया में chaos हो गया था by virtue of this judgment. So now it is very clear, if the director is a whole-time director, a full-time executive director, and withdrawing salary wherein the company is deducting TDS under section 192, the applicability of GST, the question of GST will not arise. But if the amount of tax is deducted under section 194, yes, the company would be liable to pay GST under reverse charge basis on that remuneration paid to director. तो यहाँ पे जब हम audit भी कर रहे हैं, right, 18-19 का, right now is the time to conduct GST audit of financial year 18-19. ये ध्यान रखना कि अगर 194 में कटा हुआ है, we should advise our client to pay GST under reverse charge, the company who is paying remuneration to director, and if under 192, there is no applicability of GST on this transaction. एक बहुत ही अच्छा इशू यहाँ पे क्लैरिफाई भी हो गया. एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, that question was, see कई बार क्या होता है, the employee at first instance pays the amount to the service supplier or the goods supplier. Let's say आज एक कंपनी है, उसके कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय होटल में जाके रह रहे हैं, right? The amount is going to be reimbursed by the company to the employees because the employees are going to work for the companies. वो वहां पे इसलिए ठहरे क्योंकि वहां पे कुछ कंपनी का काम था. First instance में company is not the person who is going to pay to the hotelier, it is the employee who is going to pay to the hotelier.
and subsequently the amount that is being paid by the employee will be reimbursed by the company. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया AAR को, तो क्वेश्चन ये पूछा गया the reimbursement which is going to be paid by company to the employees, क्या यहाँ पे कोई जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी आएगा, yes or no? तो यहाँ पे 30 सितंबर 2019 के पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था उस पे कहा गया कि नहीं लगेगा, लेकिन 30 सितंबर 19 के बाद लगेगा। तो एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, ये जजमेंट पे बहुत मैं डिस्कस नहीं करूंगा और आगे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा, क्योंकि इन माय ओपिनियन इट इज नथिंग बट रीइंबर्समेंट, राइट। कंपनी ने जो भी दिया है एम्प्लॉयज को वो रीइंबर्समेंट के नेचर का है। इट इज द कंपनी हु इज कंसिडर्ड सर्विस रिसीवर फ्रॉम द होटेलियर, एंड जो अमाउंट एम्प्लॉयज को दिया वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट शुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। दूसरा एक जजमेंट जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, दैट इज इन केस ऑफ दीपेश अनिल कुमार नायक, गुजरात AAR का जजमेंट है। प्लॉटिंग, ये इश्यू प्लॉटिंग के ऊपर है। प्लॉटिंग करके बहुत सारे असेसीज आज प्लॉट्स बेच रहे हैं। यहाँ पे इश्यू ये था कि असेसी ने ऐसा कहा इट इज नथिंग बट सेल ऑफ लैंड। मैं इसलिए कॉमन एमिनिटीज को डेवलप कर रहा हूं बिकॉज इफ आई एम नॉट गोइंग टू डेवलप दिस कॉमन एमिनिटीज, हु विल परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम मी। लेकिन साथ में असेसी ने ऐसा भी कहा कि आई एम चार्जिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर बिल्ट अप एरिया। सुपर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से मैं यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूं। तो AAR ने ऐसा कहा कि when you are charging on the basis of super built up area, it is not only the sale of land from your side, it also includes the development of common infrastructure which is an intrinsic part of the plot allotted to the buyer. And when it is an intrinsic part of the plot allotted to buyer, the said activity would definitely be covered under the construction services clause 5B of schedule 2 of CGST Act 2017, और प्लॉटिंग के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ऐसा गुजरात AAR ने कह दिया। लेकिन अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे कुछ जजमेंट में लूप होल है, बिकॉज देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस जजमेंट। अगर सिंपल मैं ऐसा कह रहा हूं कि माय प्रिंसिपल एक्टिविटी इज सेल ऑफ लैंड, and because I am selling land, I am also recovering those incidental development charges, because क्या होता है, अगर मैं 600 रुपया रिकवर करता हूं बायर के पास से प्लॉट के सामने, तो 590 will obviously belong to my land and remaining 10 rupee per square foot will belong to the development charges. तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये मैटर कोर्ट में जा रहा है, आगे AAR के सामने जा रहा है, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। वन, what should have been or what should be pled before the appellate authority should be that composite supply और mixed supply का concept यहाँ पे प्लेड होना चाहिए। अगर आगे मैटर जा रहा है तो what I would say, और अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं आगे क्या कहता कि it is a case where I am falling under the scope of composite supply, wherein my principal supply is sale of land, and sale of land per se is not covered by the under the ambit of GST regime. So my entire transaction should be qualified as sale of immovable property, not liable to GST. क्योंकि यहाँ पे completion certificate का भी question नहीं आता in as far as plotting of land is concerned. या तो दूसरा alternative क्या होना चाहिए? I should segregate my consideration into two parts. One with respect to my sale of plot, and second with respect to the development charges that I'm going to recover from my buyer. As far as sale of land is concerned, I should not pay GST because it is as good as sale of immovable property, but the development charges which I'm separately recovering from buyer, I should pay GST at the rate of 18% under the category of construction, and I should end the dispute. यहाँ पे मैं dispute इस तरीके से end कर सकता था, लेकिन as the matter went to AAR ने already judgment दे दिया है। I'm sure the matter will go to AAR as well as the jurisdictional high court में भी ये matter जाएगा। Let us wait for the judgment from the honorable high court, if at all it goes to the high court.
ओके, एक और इश्यू है यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा. अगेन एन इंपॉर्टेंट इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्लब एंड इट्स मेंबर. Okay, what about the membership charges or the subscription charges that is recovered by by the club or the association from its members? मेंबर्स के पास से जो सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पे, मेंबरशिप फीस के नाम पे जो अमाउंट लिया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी का क्या? There is a mixed school of thought again in case of this, the amount charged by the club from its members or the association charging the subscription charges from the members. यहाँ पे भी दो स्कूल ऑफ थॉट है. एक स्कूल ऑफ थॉट, our own institute, right? What do we do while paying membership fee? Do we pay GST along with our membership fees? क्या हम GST पे करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस के साथ? Yes or no? Yes. अभी हो गई है, right? So your answer obviously is yes. 3 साल से जब से GST आया, yes, we are definitely paying GST on membership fees that we are paying to our institute. बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे एसोसिएशंस मेंबरशिप फीस के ऊपर जीएसटी पे करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते. ये मैटर डबल ए आर में गया, महाराष्ट्र डबल ए आर के सामने. बाद में ये मैटर गया ट्रिपल ए आर के सामने, महाराष्ट्र, wherein ट्रिपल ए आर महाराष्ट्र looking to the transactions of the club between the club and its members held that the membership fees or the subscription charges that the club is charging from the members is nothing but it is reimbursement of expenses. यहाँ पे कुछ और ही कहा ट्रिपल ए आर ने. लुकिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पास्ट 2 years, ये जो चार्जेस रिकवर करता है क्लब, ये जो मेंबरशिप फी के नाम पे कंसिडरेशन ले रहा है, by virtue of this charging of this amount from the members, the club is not providing any facility to member. What the club is doing is the club is only holding meetings, seminars, conferences, wherein the entire amount charged from the members is being expended. और ये रीइंबर्समेंट का नेचर का है, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ऐसा एक डिसीजन दे दिया. You look to the crux I have put on the crux on the screen. यहाँ पे एप्लीकेंट ने ऐसा कहा था that the entire subscription or the membership amount from its members is utilized to solely towards expenditures incurred in the meetings, communication and other administrative expenses like printers, stationeries, etc. They have categorically submitted that they do not provide any facility or benefit to any of its members against the said subscription or membership fee, and the sole object of the appellant club is to promote peace, fight diseases, provide clean water, sanitation and hygiene, support education, etc. और जो 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे गए थे, वो देखते हुए ट्रिपल ए आर ने ऐसा कंक्लूड किया that appellant is not providing any specific facility or benefit to its member against the membership subscription charges charged by it, and the entire subscription amount is spent towards meeting and administrative expenditure only, and hence it was concluded that it was not carrying out any business as envisaged under section 2 subsection 17. अगर आप बिजनेस के डेफिनेशन देखो तो even though my objective or my motive is not to earn profit, right? अगर मैं प्रॉफिट अर्न नहीं भी कर रहा हूं तो भी वो बिजनेस के डेफिनेशन के दायरे में आ जाएगा. तो भी उससे कॉन्ट्ररी व्यू लेके यहाँ पे कहा, ट्रिपल आर ने कहा that no business is being carried out by the applicant and it is purely in the nature of reimbursement, and that is why GST should not be levied. ये बहुत ही controversial judgment है, right? I don't know what the trusts and the clubs or the associations located in your area, या तो जिसका आप लोग देख रहे हो, आप लोग क्या व्यू लेते हो, I don't know right now, but definitely you can go through this judgment, particularly with respect to Rotary Club of Mumbai Queen's Necklace. ट्रिपल आर महाराष्ट्र का जजमेंट है. और अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, अगर आपका क्राइटेरिया भी इस तरीके से मैट हो रहा है, I would reiterate that this would be a very risky decision on the part of the association or club,
लेकिन अगर ये सब क्राइटेरिया मीट करता है तो you can also take a contrary view, the view which is already taken by AAR Maharashtra. Okay, ये बहुत ही सिंपल सा जजमेंट है राजश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में. Whether selling of the entire business was sold for a lump sum consideration, whether it would be taxable under GST. AAR ने कहा it would be treated as a business sold as a going concern, and when a business is sold as a going concern, एक specific entry है exemption notification में, specific exemption notification में entry है notification number 12 में, rate notification, that if the business is sold as a going concern, no GST is applicable on that transaction. ठीक है, मैं बहुत emphasize नहीं करूंगा. Going forward, the decision in case of Caltech Polymers Private Limited against AAR, judgment of AAR. Okay, see, बहुत सारी जगह पे ये practice होती है. What happens is, if I'm availing a canteen service, I'm outsourcing this canteen service, and I'm giving a contract of providing food at my premises to an outdoor caterer or a canteen operator, and he is providing food for my employees. I'm a company, for example, right? The person who is providing this outdoor catering services is anyways going to charge GST, and with effect from 1st February 2019, by virtue of CGST Amendment Act 2018, if it is compulsory, if it is obligatory for me to run a canteen, I would be eligible to take benefit of input tax credit of GST paid on this outdoor catering services as well. The question that arises is, let's say मैं 50 rupees per plate पे कर रहा हूं मेरे outdoor caterer को, and I am recovering 10 rupees, a minimal amount from my employees. Am I liable to pay GST on 10 rupees recovered from my employees? ये question पूछा गया था AAR को, as well as then the matter went to AAR. दोनों के सामने ये matter रखा गया. ये दोनों ने एक ही जवाब दिया कि if I am recovering this amount from my employees, it would be as good as I am running a business of canteen. मैं कैंटीन का बिजनेस कर रहा हूँ, आउटडोर कैटरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ. ये सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा, सेक्शन 7(1) यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, and I would be liable to pay GST on this 10 rupees recovered from my employees. एक नहीं, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है पैन इंडिया जहां पे AAR ने सेम ही व्यू लिया है कि if I am recovering anything from my employee, it would amount to my consideration, my business activity, section 7(1), by virtue of section 7(1), that consideration would attract GST. So if I'm recovering an amount from my employee, I have to be very cautious, and I should charge GST by virtue of this judgment. Next, Synthite Industries Limited. Synthite Industries Limited, again this is a judgment from AAR. अगर गुड्स इंडिया में नहीं एंटर हो रहे, यूएस से गुड्स निकले डायरेक्टली फ्रांस चले गए, मैंने ही ऑर्डर प्लेस किया था यूएस के वेंडर को टू सप्लाई गुड्स टू माय रिसिपिएंट हु इज लोकेटेड इन फ्रांस, आई एम नॉट सपोज्ड टू पे जीएसटी, ऐसा AAR ने कहा. और बाद में ये एंट्री को शेड्यूल 3 में भी इंक्लूड किया गया बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 with effect from 1st February 2019. बट यहाँ पे आज एक क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, वो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अभी तो इसको सप्लाई ही नहीं माना जाता, लेकिन व्हाट बिफोर 1st February 2019, whether I would be liable to reverse common input tax credit, क्योंकि अभी तो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, उसके पहले इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाता था, अभी इसको सप्लाई नहीं माना जाता. और जब मैं बोलता हूं उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाता था बिफोर 1st February 2019, if I treat any transaction as exempted supply, the question of reversal of common input tax credit arises. It is similar to high C sales. Yes sir, it is similar to high C sales. वैसे ही ट्रांजेक्शन को मैं बात कर रहा हूं कि हाई सी सेल्स को 1st February 19 के बाद सप्लाई नहीं है, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई बिकॉज इट इज नाउ कवर्ड अंडर शेड्यूल 3. लेकिन उसके पहले क्या, 1st July 17 से लेके 31st January 19 तक हाँ जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज क्लियर, लेकिन इट वाज कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज नो सप्लाई एट ऑल.
when it is no supply at all, I am not supposed to reverse any credit, but उसके पहले का credit अगर कोई common है तो उसका issue आज भी open है, whether the department is going to ask for reversal of common credit or not is still an issue. Okay, ये भी एक बहुत ही controversial judgment है और DGGI is taking up this judgment very seriously. In case of Columbia Asia Hospitality Limited, ये issue इसलिए arise हुआ because Schedule 1 में ऐसा लिखा गया है कि even if a transaction takes place between two deemed distinct entities, even though consideration is not involved, it would tend amount to supply. यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कि जो मल्टी लोकेशनल यूनिट्स है, if a unit is a multi locational unit having registration pan India, let's say 25 registrations, 27 registration, 30 registrations है, and head office is located in one particular state, and that head office is allocating the cost to different units located pan India, even though no consideration is involved. But why this head office is allocating the cost? Because all the units located across India are the profit units or the profit making units. They want to ascertain whether that unit located in another state is achieving profit or is incurring loss. That is why common costs are being apportioned by the head office to determine whether that unit is a profit center or not, whether that unit is incurring loss or making profits or not. And all the units are profit centers in the eyes of the head office. अगर अलोकेशन हो रहा है तो ये ठीक है मानना कि भाई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और जीएसटी चार्ज होना चाहिए टू सम एक्सटेंट. हाँ, नॉट श्योर, टू सम एक्सटेंट आई ऑल्सो बिलीव कि यस. लेकिन मैं अभी भी ऐसा फर्मली बिलीव कर रहा हूं कि अगर हेड ऑफिस इज इन रिसिट ऑफ अ सर्विस विच इज कॉमन अमॉन्ग ऑल द यूनिट्स and there is no ISD registration taken by this entity, let's say chartered accountant का bill गया head office, लेकिन that chartered accountant is providing services to all the units across India, then only why that head office should take benefit of input tax credit? The head office should allocate the expenditure among the units, and the credit should also be apportioned, not as ISD, but by virtue of Schedule 1 also the GST should be charged. It is as good as you are allocating the credits as ISD. वहां पे ठीक है, लेकिन what about the other costs, the other common costs, like the costs of an employee who are sitting in the head office and working for all the units. सभी यूनिट्स के लिए काम कर रहे हैं हेड ऑफिस में बैठ के, उसका कॉस्ट अगर हेड ऑफिस अलोकेट कर रहा है तो वहां पे भी चलो ठीक है, वो भी लॉजिकल है. ये बाय वर्च्यू ऑफ दिस जजमेंट कोलंबिया एशिया हॉस्पिटैलिटी, ऑब्वियसली इट हैज बीन चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या कहेगी नहीं पता है इसमें. लेकिन अगर मैं कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं, कॉमन कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं, वहां पे जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1. बट व्हाट अबाउट दोस केसेस, व्हाट अबाउट दैट हेड ऑफिस who is not apportioning common cost to its units, जो common cost apportion ही नहीं करता? क्या कॉस्ट अपोर्शन करना कंपलसरी है कोई एक्ट में? आई डोंट बिलीव सो. इट इज नॉट कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इट इज नॉट कंपलसरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज नॉट कंपलसरी इवन अंडर जीएसटी एक्ट में भी ये कंपलसरी नहीं है कि मैं कॉस्ट अपोर्शन करूं. जब कॉस्ट अपोर्शन ही नहीं कर रहा हूं तो अभी डीजीजीआई एक स्टैंड ले रहा है, आके एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, आके एक इश्यू क्रिएट कर रहा है. Like director remuneration, director is acting commonly for all the units, and even though you are not allocating this expenditure, this common expenditure, you should allocate and you should pay GST on the notional values. Now I don't know कि कितना सही है ये contention DGGI का या डिपार्टमेंट का, कितना वैलिड है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मुझे नहीं करना है एज एन HO, एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर मुझे नहीं क्रॉस चार्ज, यस आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस चार्ज, मुझे अगर नहीं करना है कॉस्ट को अपोर्शन, तो इट इज माय प्रेरोगेटिव. हाउ कैन डिपार्टमेंट फोर्स मी टू अपोर्शन माय कॉस्ट अमंग माय यूनिट्स?
अगर कॉस्ट अपोर्शन कर दिया है और जीएसटी पे नहीं किया है तो वहां पे कुछ भी डिपार्टमेंट इश्यू क्रिएट कर सकता है, चलो इट इज लॉजिकल बिकॉज देयर इज एन एंट्री इन शेड्यूल 1, बट मैं अपोर्शन ही नहीं कर रहा हूं, देन व्हाई शुड आई बी मेड लायबल टू अपोर्शन माय कॉस्ट? लेकिन एज द सिचुएशन इज रेवेन्यू न्यूट्रल, जब तक इसका जजमेंट नहीं आता, जब तक ये इश्यू सेटल नहीं होता, राइट, रेवेन्यू न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि मेरा एक यूनिट जीएसटी पे कर रहा है और दूसरा यूनिट इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ शियोमोटो पेड, so I should pay the amount and I should claim benefit of input tax credit in the other states. Base क्या लोगे? Just like ISD, you can take base of past year's turnover and allocate the expenditures among the units if they are common. I am not talking about all the expenditures to be apportioned. I am talking about only those expenditures which are common among these units, right? क्योंकि डिपार्टमेंट आके डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, सेक्शन 74(5) में डिमांड क्रिएट करेगा, आप भरोगे तो योर यूनिट्स विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। डिपार्टमेंट कभी भी 73(5) इन्वोक नहीं करेगा, डिपार्टमेंट हमेशा आपके केस को 74(5) में ही ले जाएगा और बताएगा इट वाज अ केस ऑफ फ्रॉड, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट, मेलेफाइड इंटेंशन ही प्रूव करने का ट्राई करेगा एंड you would be denied the benefit of input tax credit in your other states. So to avoid those disputes, I personally suggest not to enter into those disputes and apportion the credits among your units. Next judgment is in case of Sanofi India, again AAR. The question which was raised before the AAR was with respect to input tax credit on the promotional schemes, the input tax credit on the sales promotion activity, right? So what about the input tax credit on the sales promotion activity? आज भी ये इश्यू है, इश्यू अभी भी है, litigation prone to litigation है. The issue is what about input tax credit on the sales promotion activity incurred by the assessee? Sales promotion activity पे input tax credit का क्या? Whether you are availing the benefit of input tax credit on sales promotion, yes or no? Whether it is hit by the provisions of section 17(5), क्या कोई जगह पे सेक्शन 17(5) बोल रहा है कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी पे मैं जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकता? Yes, somebody has replied, कोई किसी ने रिप्लाई किया है, yes sir, अवेल कर रहे हैं, ओके। ये जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के केस में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट पर्सनली स्पीकिंग सेक्शन 17(5) doesn't talk about sales promotion activity. Section 17(5) talks about gift. There is a thin line of difference between sales promotion and gift. Gift is something which is voluntary. Gift ऐसा कुछ है जो voluntary है, right? Sales promotion is obviously in the course of furtherance of my business. अगर मैं sales promotion activity कर रहा हूं तो वहां पे तो credit allowed होना ही चाहिए. What is restricted is gift. अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं आगे किसी और को तो वहां पे आई एम नॉट गोइंग टू पे जीएसटी एंड दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी दैट आई हैव पेड ऑन परचेजिंग ऑफ दिस गिफ्ट एलिमेंट्स. सो गिफ्ट पे नहीं मिलेगा, वहां तक एग्री हूं, लेकिन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी किया वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा, उससे उतना एग्री नहीं हूं. अल्टीमेटली इट विल बी योर कॉल. ओके, बहुत सारे हमने जजमेंट्स डिस्कस कर लिए. मुझे एक और चीज कही गई थी डिस्कस करने के लिए जो आज भी कंट्रोवर्शियल है. ओके, व्हाट अबाउट आईटीसी ऑफ कैलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सेल्स प्रमोशन, विल दैट बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट? ओके, ये असेसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट नहीं है, इट इज माय सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी. सेल्स प्रमोशन इसलिए है क्योंकि इससे मेरे ब्रांड नेम का एडवर्टीजमेंट होता है, इससे मेरा खुद का एडवर्टीजमेंट होता है, राइट?
बहुत सारी जगह पे गोल्ड कॉइन देने का भी एक ट्रेडिशन है. इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट गिफ्ट. वो आपको प्रूव करना पड़ेगा. इसलिए मैंने पहले ही कहा कि गिफ्ट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. गिफ्ट इज समथिंग विच इज वॉलेंट्री, राइट? तो अगर मैं कुछ वॉलेंट्रीली एक्ट करके दे रहा हूं, किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, तो उसका आईटीसी प्रोहिबिशन होगा. वो आपको प्रूव करना पड़ेगा. इट इज नॉट गिफ्ट. किसी ने मुझे पूछा व्हाट अबाउट आईटीसी फॉर फॉरेन टूर्स? देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 17(5). कोई जगह पे प्रोहिबिशन नहीं है. मैं फॉरेन टूर कर रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं. ट्रैवलिंग में एक ही प्रोहिबिशन है, रेंट अ कैब. रेंट अ कैब को अगर छोड़ दिया जाए, किसी और फॉरेन टूर के रिस्पेक्ट में, ट्रैवलिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी आईटीसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अंडर सेक्शन 17(5). One more, with respect to export of services, department says the amount should be received within 1 year from the date of invoice, as there is a time limit stated through Rule 89. Whereas the definition of export of service is not specifying any time limit for recovery from debtors. Further, can a rule override the Act, as Act nowhere states the time limit will be prescribed or such other wording? सर यू आर ट्रू. कोई भी जगह पे ऐसा स्पेसिफिकली एक्ट में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप देखो तो रूल 96B विच इज रिसेंटली इश्यूड, रूल 96A एंड रूल 96B विच इज स्पेसिफिकली इंसर्टेड, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पावर्स डिराइव किए हैं, ये पावर्स गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 बाय वर्च्यू ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर 148 गवर्नमेंट ने पावर्स डिराइव किया है. Now it would be imperative to see whether this kind of powers are given in section 148 or not. If yes, government can put a restriction of receiving the amount of consideration from the debtor within a stipulated time period, right? Okay. एक और issue जिसके ऊपर I would will try to throw a light on is RCM of ITC of liability discharged under reverse charge mechanism after the stipulated due date. Okay, अगर मैं RCM के ITC की बात करूं, ये बहुत ही again it is a very much controversial issue right now prevailing amongst the assessee and the department. The reason being there is no clarity on this issue till date. There is no judgment from any appellate authority or the tribunal or the jurisdictional high court. इसके ऊपर कोई भी clarity नहीं है. यहाँ पे दो व्यूज पॉसिबल है. मैं दोनों व्यूज को आपके सामने रखना चाहूंगा. से अभी ये इश्यू हमको 18-19 के ऑडिट में भी ये इश्यू सताता है. हमें ये इश्यू बॉदर कर रहा है because while conducting the audit for the financial year 18-19 we come across various payments wherein the assessee was supposed to pay GST under reverse charge, but the assessee miserably failed out paying GST under reverse charge, right? सर्विस टैक्स रिजीम में भी अगर मैं रिवर्स, द बेसिस ऑफ टेकिंग क्रेडिट अंडर सर्विस टैक्स वाज द चलन इटसेल्फ. अगर मैं पे कर रहा हूं आज, तो वो चलन के बेसिस पे आई वाज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेंडवैट क्रेडिट. अगर मैं आज के सिचुएशन की बात करूं, जीएसटी रिजीम की बात करूं, तो व्हाट इज इंपेरेटिव टू go through is section 31 subsection 3 clause F read with rule 36. And if I talk about section 31 subsection 3, it starts with non-obstanted clause. Non-obstanted clause मतलब notwithstanding anything contained in subsection 2 and subsection 3. इस तरीके से स्टार्ट होता है section 31 subsection 3. And section 31 subsection 3 talks about invoice read with rule 36. What is the basis of claiming input tax credit as far as RCM is concerned? As far as RCM is concerned, if I have availed services or goods from unregistered person, it is me who has to raise a self invoice in my own name, and that would be the very basis of taking benefit of input tax credit. So अगर मैं आज पे कर रहा हूं, I can very well
raise a self invoice in my own name if I have availed services, if I have availed goods from unregistered persons. I am not talking about goods. मैं अभी goods की बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about services, because if I go through the provisions of section 9(3), right? So 9(3) talks about paying GST under reverse charge, read with notification number 11, which have specified few services जहां पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना है. तो ये सब सर्विसेज के ऊपर मैं भूल गया. फॉर एग्जांपल, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ 1819 आई केम टू अ सर्विस. लेट्स से आई पेड legalization charges, professional fees to a person located outside India, wherein I was supposed to pay IGST under reverse charge. जहां पे मुझे IGST भरना था रिवर्स चार्ज में, but I failed paying GST under reverse charge. मैंने GST नहीं भरा रिवर्स चार्ज में. तो अभी मैं भरवा रहा हूं, अभी मैं खुद डिटेक्ट कर रहा हूं. भूल जाओ ऑडिट, भूल जाओ, खुद डिटेक्ट कर रहा हूं. अगस्त 2020 में डिटेक्ट कर रहा हूं कि 1819 का आरसीएम के अंडर जो मुझे जीएसटी भरना था वो मैं भूल गया, आज पे कर रहा हूं. आई कैन रेज अ सेल्फ इनवॉइस इन माय ओन नेम एंड आई कैन टेक क्रेडिट. ऐसा एक व्यू है. आई एम नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस आईटीसी. मोठ्यांना फोन लावला होता का? सॉरी, नो सर. को किरण सर म्यूट कीजिए अपने आप को. सर यू कैरी ऑन. ओके सो कोई क्वेश्चन नहीं है, फाइन. मैं इसलिए कंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि इफ आई गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13(3), अगर मैं इसको रीड करूं तो in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid under reverse charge, the time of supply shall be earlier of the following dates: the date of payment as entered in the books of accounts, or the date on which the payment is debited in the bank account, whichever is earlier, or the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier. Now, if I read this, if the document issued by supplier is of 60 days before the date of payment, जहां पे registered है, right? यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो इट मींस के 60 डेज के अंदर अंदर मुझे इनवॉइस इश्यू करना था, जो मैं आज ही इनवॉइस इश्यू कर रहा हूं. अगर तब करना था तो मुझे क्रेडिट भी तभी लेनी थी. आई कैन नॉट टेक क्रेडिट राइट नाउ. दिस इज वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, and it will be hid by the provisions of section 16(4), which says that I can avail input tax credit up to the date of filing my return for the month of September falling after the end of the financial year. तो यहाँ पे दोनों व्यूज पॉसिबल है. जब तक कोई भी जजमेंट नहीं आता, जब तक कोई भी कोर्ट का जजमेंट नहीं आता, अपीलेट अथॉरिटी का जजमेंट नहीं आता, अगर आप भूल गए हो आरसीएम भरना, तो ये व्यू मत लो, बिकॉज इट वुड बी वेरी रिस्की व्यू कि जब डिपार्टमेंट आएगा डिटेक्ट करेगा हम भरेंगे. नो, दैट वुड बी अ वेरी रिस्की व्यू, बिकॉज in that case it is very specifically mentioned in section 74(5) that I won't be eligible to avail benefit of input tax credit. बेटर व्यू ये है कि आप आरसीएम के अंडर लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दो, take the benefit of input tax credit and don't utilize the benefit of input tax credit अगर आपको रिस्की लग रहा हो. अगर आपको इंटरेस्ट का बर्डन से आप डर रहे हो, पेनल्टी के बर्डन से डर रहे हो, the ideal option would be discharge your liability right now if you have missed out, even pertaining to 17-18. अगर आप भूल गए हो, 18-19 का भूल गए हो, 19-20 का तो आपके पास टाइम है. You can still pay in this month, in next month, or the return to be filed for September in the month of October 2020. 17-18 भूल गए हो, 18-19 भूल गए हो, show in your GSTR 3B and claim benefit of input tax credit. अगर रिस्की लग रहा हो, don't utilize the benefit of input tax credit. So I have presented both the views, right? एक और मैं आपको जजमेंट शेयर करना चाहूंगा, that is with respect to royalty. In case of royalty also, it has been decided by AAR. बहुत सारे AAR, AAR ने सेम व्यू दिया है. इवन कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड कि यहाँ पे जीएसटी आरसीएम में भरने का लायबिलिटी असेसी का आएगा if the amount of royalty is paid to state government.
a corporation or the central government for getting some rights like mining rights, right? So now when you are paying GST under RCM, the second question which arose before these authorities was, what is the rate at which the GST is required to be paid under RCM? Whether it is to be discharged at 5 or 18, the authorities said the GST is required to be discharged at the rate of 18, falling under head 9973. Another question that arises is, after paying this amount under RCM, ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है कि RCM में एक बार पे तो कर दिया, बाद में वो क्रेडिट अक्यूमुलेट होता जाता है, because might be the scenario would be कि I am not liable to pay GST on my outward supplies. If I am not liable to pay GST on my outward supplies, there is no question of taking credit at all. It would be my expenditure in my hands. लेकिन जहां पे exempt supply नहीं है, जहां पे I am paying GST at the rate of 5 or 12 and the credit gets accumulated by paying a GST under RCM on this royalty, what would happen is, by virtue of the judgment given by Honorable Gujarat High Court, अगर कोई specific restriction नहीं है, chapter restriction नहीं है, I can very well take benefit of refund for this accumulated ITC, जो पहले नहीं ले सकता था क्योंकि इनपुट सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसा एक कंटेंशन था जो गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, राइट? तो उसका भी मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं. Coming to the last issue of this restriction of 10% and 20% input tax, ये बहुत ही controversial issue है. Again, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस सर्व की है, गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस सर्व की है डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को कि हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट credit to the extent of 10% and 20%, basically because GSTR2 is not working, GSTR3 is absent right now. When GSTR2 and GSTR3 is not in place, even if I want to convey to my supplier that you have forgot uploading my invoice in your GSTR1, how would I tell my supplier? क्योंकि अगर GSTR2 होता तो मैं वहां पे मेरे पास एक राइट था, वहां पे मैं एक एंट्री इंसर्ट कर सकता था मैन्युअली. जब GSTR2 है ही नहीं, उसको अबेयंस में रखा है, जब GSTR3 को अबेयंस में रखा है, how can government restrict 10% my credit to the extent of 10% or 20%? जब आया 9 अक्टूबर 2019 से ये प्रोविजन, by inserting a notification 14 by way of a notification 49 by 2019, गवर्नमेंट ने पहले कहा जो भी GSTR2A में आपका क्रेडिट, लेजिबल क्रेडिट, आई मीन टू से अवेलेबल क्रेडिट, एलिजिबल क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, if 100 is reflected, you can take credit to the extent of 120. बट अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 150 है, वो भी कौन सी डेट पे देखने का? 11th पे देखने का. 11th पे ये नहीं बोला गवर्नमेंट ने कि यू सी योर GSTR2 at 12 PM, रात को 12 AM, सॉरी 12 AM में देखो, ऐसा नहीं बोला. You also know and me also know, we know कि GSTR2A is such a form that it gets updated on real time basis. So what happens is 11th is the due date, the cutoff date to file GSTR1. अगर मैं रात को 12 बजे देखूंगा तो the credit would be, let's say, 1 CR for that particular tax period. Or immediately if I see the credit on the next day on 12th, I would get some other amount. वो जैसे ही अपडेट होगा साइट पे, क्योंकि साइट पे आता है, राइट? द साइट इज योर GSTR2A is updated last on 11th, you're updated on 12th. आज सुबह 9 बजे अपडेट हुआ, आज सुबह 12 बजे अपडेट हुआ, तो 9 और 12 के बीच में भी क्रेडिट बदल जाएगी, राइट? द थिंग इज कि गवर्नमेंट, हेलो, कोई क्वेश्चन? No, sir, continue. Please continue. Okay. The moot question that arises is, गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि 11 is the cut off date, 11 का क्रेडिट देखो, तो क्या रात को 12 बजे सभी असेसिस का हम क्रेडिट देखने बैठेंगे? एंड हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप ट्रैक? क्योंकि जब ऑडिट या असेसमेंट आएगा तब वो क्रेडिट दिख रही होगी, लेकिन 11 को नहीं दिखी, वैसा कैसे पता चलेगा? Who is going to control this kind of credits? Right?
So that is why a petition has been filed before the Honorable Gujarat High Court, the Honorable Delhi High Court. दोनों ने petition को admit किया है, but till the time favorable decision नहीं आता, I'm very much hopeful of getting a favorable decision from both the high courts. जहाँ पे पहले hearing होगा वहां से favorable decision आएगा इसमें, लेकिन नहीं अगर adverse decision आया, तो how will you control these credits? There is no mechanism to control these credits. क्योंकि there are various suppliers who are going to file the returns on quarterly basis, and government is thinking to raise this limit to 5 crores. अगर मेरे 5 crore से ऊपर है, मुझे quarterly का अगर option मिल रहा है, तो मेरा obviously credit नहीं दिखेगा. So by doing this, whether the government wants to demotivate procurements from the quarterly suppliers, the small suppliers, और गवर्नमेंट ऐसा कहना चाहती है कि एवरीबॉडी शुड कंप्लाई ऑन मंथली बेसिस एंड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ फाइलिंग दैट जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस. जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती, एंड इफ वी लुक टू दिस प्रोविजन, से प्रोविजन क्या कहता है कि अगर मुझे 100 का क्रेडिट दिख रहा है, एलिजिबल क्रेडिट, हाँ, वो भी मुझे फाइंड करना है, क्योंकि जीएसटीआर 2A में तो इनएलिजिबल क्रेडिट्स भी दिखेगा. I would be in a position to see the credit of a motor vehicle as well, which I cannot avail as per the provisions of section 17(5). So what would happen? I have to find out, I have to carry out an exercise wherein I have to find out my eligible credits as on 11. I have to add 10% and take the credits as per 2A. ये कौन ट्रैक रखेगा? फिर क्रेडिट दिखी, वो माइनस करो, नेक्स्ट मंथ की क्रेडिट ऐड करो. So it is either, if you want to rigorously follow this provision, what you can do is you can simply go through, you can take credit as per 2A, simply as per 2A, ignoring 10%, 20%, or you can take credit as per your 3B. I mean to say as per your books of accounts, whatever is reflecting in your books of accounts. Okay, लेकिन अभी fortunately एक relaxation दिया है, right? The relaxation is up to September 2020. मतलब अगस्त का रिटर्न फाइल करो सितंबर 2020 में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसके बाद आपको फरवरी 2020 से लेके सितंबर 2020 तक का रिकंसिलिएशन करके आपको क्रेडिट लेना है. हाउ? मैंने एक एग्जांपल दिया है स्क्रीन पे, इफ यू आर एबल टू सी. फॉर एग्जांपल 5 lakh is my eligible ITC as per books of accounts, and as per 2A only 4 lakh was reflecting in the month of February. Because of this COVID pandemic, the government allowed the credits whatever is reflecting in your books of accounts to solve the issue of crash crunch, right? Crash crunch आपको ना हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है आप ले लो. 5 लाख दिख रहा है, 5 लाख ले लिया. दूसरे महीने में 7.5 लाख दिख रहा है, वो भी ले लिया. बाद के महीने में मैंने 3 लाख लिया, 8.5 लाख लिया, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैंने ले लिया. लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फरवरी से लेके अगस्त तक का आप क्रेडिट जो भी आपने जीएसटीआर 2 में दिख रहा है और आपने लिया, उसको कंपेयर करो और टोटल करो कि 2A का ये 6 महीने का या 7 महीने का क्रेडिट जो हो रहा है उसमें 10% ऐड करके ही आप क्रेडिट ले सकते थे. सो जो आपने एक्सेस लिया वो क्रेडिट रिवर्स कर दो while filing return for the month of September 2020. So in this example, जो भी मेरा 2A में दिख रहा है उसमें 10% ऐड करके 32,50,000 में उसका 10% 3,25,000 ऐड करके total eligibility was 3575, wherein I have already availed 41 lakh rupees, so differential credit is required to be reversed. तो सितंबर महीने का जो 8,50,000 है उसमें उतना क्रेडिट में लेस करके क्रेडिट I would be eligible to avail. That would be resultantly a net input tax credit of 4,10,000. So this exercise is required to be carried out in the month of September, right? So these are all the issues and the recent landmark judgments that I have tried to throw a light upon in the time limit given to me. Hope I have done some justice from my side. You can raise your questions, your queries, if at all, with respect to my topic or with respect to other topics as well. So this was all from my side. Right? Yes, I will definitely share my PPT. I will mail to the chairman, sir, of Akola branch or Ahmednagar branch. Right? I will mail the PPT to the chairman, sir, and he will circulate my PPT to all of you.
Yes, any questions from your side? Your opinion in short regarding 64? हाँ, देखो मैं तो अभी जजमेंट का वेट कर रहा हूँ और मैं एक एग्रेसिव ओपिनियन पे हूँ कि इट इज नॉट possible to take credits as per 2A and add 10% to it, No, sir, I right? am talking 16.4, 16.4, 180 days, 16.4. 16.4. Okay, you're talking about section 16.4. You're not talking about rule 36. Okay. As far as 16.4 is concerned, अगर मैंने 180 days में पेमेंट नहीं कर रहा हूं मेरे वेंडर्स को, तो बाय वर्च्यू ऑफ द सेकंड प्रोविजो, right now we are taking a conservative view in this case, because even this kind of provision was existing in the earlier finance act regime as well, wherein nobody challenged that provision. वहां पे लिमिट 1 year था सर्विसेज के केस में, No, sir. किसी ने चैलेंज नहीं किया था वहां पे. So 16.4 says कि if you are not putting ITC within 180 days, you are supposed to reverse, right? लेकिन अगर रिवर्स नहीं किया है आपने क्रेडिट, नहीं रिवर्स का नहीं सर, हमने क्लेम ही नहीं किया आईटीसी, और उसके बाद में सितंबर तक जो करना था हमने नवंबर दिसंबर में डाला आईटीसी रिटर्न. ओके, उस वाला बोल रहा हूं. सुनो, इफ यू आर टेकिंग अ व्यू कि हम क्रेडिट तभी लेंगे जब हम पेमेंट करेंगे, ये व्यू ज्यादा रिस्की हो जाएगा. द रीजन बीइंग कि फर्स्ट टाइम अवेलमेंट पे तो रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 16.4 में कि आई हैव टू टेक क्रेडिट इन माय रिटर्न टू बी. देखो ये रिटर्न 3B को रिटर्न माना जाए नहीं माना जाए, ये कोर्ट्स के ओपिनियन है अलग अलग, राइट? लेकिन अगर मैं 3B को रिटर्न मान रहा हूं मेरा, एंड इफ आई विदाउट टेकिंग क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू सितंबर, एक पर लगा, I would be placed in a very difficult situation. तो मेरा यहाँ पे व्यू ऐसा रहेगा, सितंबर के रिटर्न में एक बार लेके नीचे ही रिवर्सल कर दो. इफ यू आर गोइंग टू टेक क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट दैट यू आर मेकिंग टू योर सप्लायर्स, अगर आप वो एनालॉजी से आप क्रेडिट ले रहे हो ना, तो फाइन, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट बेस्ड ऑन योर पेमेंट्स. बट ऐसे केसेस में सितंबर में आइडेंटिफाई करो कितनी क्रेडिट्स थी और नीचे अदर रिवर्सल्स में उतनी क्रेडिट रिवर्स कर दो, तो आपने एक बार आपका क्लेम सब्सटेंशिएट कर दिया है विद इन द टाइम लिमिट. देन यू कैन टेक क्रेडिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. टेकिंग द क्रेडिट हैज नो टाइम लिमिट. आप 2 साल बाद पेमेंट करो, 5 साल बाद पेमेंट करो, फिर से तब क्रेडिट ले सकते हो. और दूसरी चीज, अगर आप भूल गए हो रिवर्स करना 180 डेज में, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, एट द एंड ऑफ 180 डेज यू हैव नॉट रिवर्स द पेमेंट, you have not reversed the credit. What is the ideal situation is, let's say 6 महीने बाद नहीं, आपने 8 महीने के बाद पेमेंट किया, तो what government can expect from me in the worst situation is the interest for this 2 months, क्योंकि 6th month के एंड में मुझे रिवर्स करना था, बाद में वापस तो मैं ले ही सकता था, पेमेंट किया तब 2 महीने के बाद, मतलब 8 महीने के एंड में, 8th month के एंड में. इन दैट केस 2 months का मैक्सिमम गवर्नमेंट मेरे पास इंटरेस्ट मांग सकता है. किसी ने क्वेश्चन ने पूछा, इज पेमेंट ऑफ 180 डेज एप्लीकेबल टू कंपनी व्हिच हैज वेंट टू से एनसीएलटी में गया नहीं गया हैज नथिंग टू डू विद जीएसटी एक्ट, राइट? लेकिन व्हेन द मैटर हैज ऑलरेडी वेंट टू एनसीएलटी, इट इज द लिक्विडेटर हु हैज टू डिसाइड द पेमेंट मोड. और बाद में डिपार्टमेंट को भी अगर कोई क्लेम करना है तो डिपार्टमेंट को भी क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा. Department cannot go to the company and raise a demand in favor of company. Department has to put up a claim और वो claim lodge होगा. जितना पैसा होगा उतना ही पैसा परिपासु मिलेगा डिपार्टमेंट को भी. तो कंपनी की लायबिलिटी वहां पे खत्म हो गई. एक बार एनसीएलटी में गया तो डिपार्टमेंट विल नॉट अप्रोच द कंपनी, डिपार्टमेंट विल नॉट मेक द कंपनी लायबल टू पे. इट इज द ऑफिशियल लिक्विडेटर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो डिपार्टमेंट को उसके लिए क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा, right? Yes, anything else? Any Sir, members having query, please ask. Sir, am I audible, sir? Yes, please. Yes, you are audible, please. Sir, when the reversal mechanism stated in that section, it says that you have to reverse the credit. I'm talking Right. about that 180 days thing. Right, You have to reverse the credit in GSTR 2 as per the rule specified over there. When GSTR 2 Right. is not made available by portal or by government, how are we supposed to reverse the That is credit? why I agree. That is why
on the very first instance what I said is कि मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ integrity में whether GSTR 3B should be considered as a valid return for the purpose of this provision or not, क्योंकि इस पे अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजंस है और एक कोर्ट ने तो ऐसा भी कह दिया दैट GSTR 3B इज अ वैलिड रिटर्न, कोई कोर्ट ने कहा इट इज नॉट अ वैलिड रिटर्न, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड बना दिया रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आई एम नॉट गोइंग इनटू द nitty-gritty of whether GSTR 3B is a valid return for the purpose of this provision or not. लेकिन अगर GSTR 3B को वैलिड रिटर्न माना जाएगा कल उठ के तो यस ये इश्यू आएगा। नहीं सर 3B तो रिटर्न है सर, ठीक है, ये कोर्ट ने बोल दिया कि 3B रिटर्न रेट्रोस्पेक्टिव, बट सर जो सेक्शन है ना उसमें बोला है कि एज पर द रूल टू में करना है, टू में करना है, टू तो है ही नहीं ना सर, उसमें कैसे करेंगे रिवर्स? तो गवर्नमेंट ने ऐसा ही बोला कि जहां जहां पे 2 और 3 का जिक्र किया गया है वो 2 और 3 को रिप्लेस करके हम 3B को उसको सामने रिटर्न बना रहे हैं। 3 को रिप्लेस करके ना सर, 2 को भी रिप्लेस करके ऐसा बोला है? 2 और 3 दोनों को, 2 और 3 दोनों को, दोनों। ओके ओके, तो इसलिए क्वेश्चन इज ओके प्लीज गो ऑन सर, प्लीज कंटिन्यू। तो इसलिए लेट अस वेट ऑन दिस इश्यू, राइट। इसका इंटरेस्ट अगर आज रिवर्स नहीं भी कर रहे हो आप तो इंटरेस्ट तो उतने का उतना ही रहने वाला है कल भी। मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया 6 महीने के बाद आपको रिवर्स करना था, नहीं किया और 8th मंथ पे पेमेंट कर दिया आपने पार्टी को, तो गवर्नमेंट आज भी अगर हम रिवर्स करें तो 2 मंथ का इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में। तो कल उठ के अगर गवर्नमेंट भी डिटेक्ट करेगा तो वर्स्ट सिनेरियो में इट वुड बी एन इंटरेस्ट ऑफ 2 months ऑन दैट ITC। Sir, that is okay, sir. I understood. Sir, now suppose if our contract itself was of 2 years, that we will make the payment in 2 years. It has nothing to do with your terms and agreements, right? ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे क्लॉजेस होते हैं कि पेमेंट टर्म्स ही 2 साल का है, 3 साल का, 5 साल का है, मुझे 180 डेज में पेमेंट ही नहीं करना है, लेकिन जीएसटी एक्ट को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे केसेस में अ कंजर्वेटिव व्यू वुड बी कि जो बिल आया उसका एक बार क्रेडिट ले लो और वही रिटर्न में उसको रिवर्स कर दो एंड टेक द क्रेडिट व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट आफ्टर 2 years। वहां पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं रीटेकिंग ऑफ क्रेडिट में, तो रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम आप क्रेडिट को रीटेक कर रहे हो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो take the credit, actually use the credit and take the credit after 2 years, 3 years, 4 years, whenever you are making the payment, right? This would be the conservative view right now. Okay, sir. So my second question is that considering this decision of Safari Retreat, can you take the same stand in construction of marriage halls and in construction of hotels? But why not? Because आगे होटल भी, होटल का इंटेंशन क्या है? रूम रेंट पे ही देना है ना, अकोमोडेशन रेंट पे ही देते हैं ना, and they are paying GST. Right? Correct. And even the marriage hall, the intention of marriage hall is also to give the hall on rent. You can definitely take this view on the basis of this judgment, but don't utilize the credit till the time the clarity comes from the Honorable Supreme Court. Okay, sir. And sir, the third question was regarding that I have asked in the chat box also. You said that you will reply it later about that foreign intermediary service or foreign broker. I will put it again in the group. Please. Yes, sir. Yeah, welcome Anand Jakotia sir, WRC treasurer. किरण भाई सर कोई नहीं है यहाँ पर। Okay, if a tour operator sitting in foreign arranges tour for Indians and charges commission from Indian citizens, then is he an intermediary and GST is applicable? And also, will the situation change if that foreign tour operator is giving services to Indian tour operator? Okay, see, tour operator is also considered as a facilitator, right? Because he also arranges tours, books the hotels, etc., etc. अगर वो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में टूर ऑपरेटर फॉल हो रहा है और वो फॉरेन में बैठा हुआ है, भले इंडियंस को सर्विस प्रोवाइड करे और कमीशन इंडियन के पास से चार्ज करे, he won't be liable to pay GST on this transaction if we go through the provisions of section 13(8) to 13(8)(b. और सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपका क्वेश्चन ऐसा है, if the situation change, if that foreign tour operator
is giving the situation will not change, because he is an intermediary. An intermediary is located outside India, and the place of supply will always be considered as the place of supplier of service in case of an intermediary. तो सर आरसीएम में भी नहीं आएगा ना अपने को किसी को भरने को? नहीं आएगा, क्यों आएगा? अगर मैं कमीशन के नेचर का कोई भी पेमेंट कर रहा हूँ इंडिया से बाहर, तो the person located in India is not supposed to pay GST under reverse charge mechanism basis. No, because place of supply itself is outside India. Reverse charge तभी आता है जब place of supply is in India. Yes, Jitu bhai, you can ask your question. Jitu bhai. Thank you. Yes, yes. Jitu Savlani, you can ask your question. Any other members having query can ask. Otherwise, we will conclude the session. हेलो Please. Yeah, you can ask. सर, question. मेरा एक क्लाइंट है. हाँ. हाँ सर, वो एक्चुअल में ऑनलाइन मोबाइल बुकिंग करता है. तो वो Okay. कैसे है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मोबाइल बुक करता है Okay. कस्टमर के नाम पे, और कस्टमर से उतना ही पैसा कलेक्ट करके उसके ऊपर 500 रुपीज एक्स्ट्रा लेके उतना वो कर देता है, लेकिन वो जीएसटी में शो नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल भी उसके नाम पे रेज नहीं हो रहा है और वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक में उसकी हैवी ट्रांजैक्शन हो रही है. ठीक है, ऐसे केसेस में देयर इज अ सर्कुलर, एक सर्कुलर है इसके ऊपर, मुझे सर्कुलर नंबर याद नहीं है. ये सर्कुलर में क्लैरिटी दी गई है कि ओनली कमीशन अमाउंट इज लायबल टू टैक्स. जैसे उतना अमाउंट जीएसटी में लायबल होगा ना टैक्स के. yes, commission amount, because he is also considered as an intermediary between the main company and the service recipient. अच्छा, मना वो फिर इनकम टैक्स में सर पूरा दिखाएंगे, समझो मैं तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा. I agree. So if the person is liable to file GST or 9C as well, start with your total amount. हाँ. And show in that column of other adjustments. ओके, लास्ट वाले में. हाँ, तो क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी CBIC has integrated its portal with IT department's portal, right? So turnover as per your 9C should ideally match with turnover as per the data that you submit to income tax department, right? Yes. So yes. दिक्कत ना हो इसकी वजह से you can do this. मना दोनों जगह. Or you can also refer to a circular. Again, service tax regime में भी circular था on this the commission agents who are acting on behalf of telecommunication operators. Finance Act में भी इसके ऊपर clarity है, so you can go through that circular as well. अच्छा, वो दोनों केस में उतना कर सकते हैं. वो रिचार्ज होता है ना, रिचार्ज का भी सेम, वो रिचार्ज के ऊपर है कि 300 रुपए का रिचार्ज किया तो he is not returning 300 रुपए. हाँ, क्योंकि वो 300 रुपए तो ऑपरेटर के पास चले जाते हैं ना. वो 280 नहीं, उसमें ऐसा था 20 रुपए वो काट के 280 रुपए देगा. हाँ, ऑपरेटर को. राइट. तो 300 रुपए के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता, उसका सर्विस टैक्स का एलिमेंट खाली 20 रुपीस के ऊपर ही सीमित है. सो ये क्लैरिटी ऑलरेडी दी गई है फाइनेंस एक्ट में. यू कैन रिफर टू दैट सर्कुलर एज वेल, राइट? ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच. Please ask your query. Preeti madam. Sir, I have a query. Yes, ma'am, please. One of the trust is having a land from somebody. He say XYZ, and they have taken cultivation rights from him since like centuries. Like at least more than 50 years back, they had taken cultivation rights. Now they are enunciating this cultivation right. They are giving back the owner that cultivation right, that trust. So is GST applicable in this case? Madam, with respect to cultivation rights particularly, this is not something like development rights that a builder is getting from the landowner, right? ये development right नहीं है. ये जो cultivation right है, it has direct nexus with my agricultural produce, right? Yes. But there is one anomaly here, that it is a trust, and as per as the definition of GST, trust cannot be agriculturist. मैडम, ट्रस्ट हो या दूसरा कोई लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हो, जीएसटी के आईज में डिफरेंशिएट नहीं करता. ट्रस्ट हो कि कंपनी ने लिया हो, फॉर एग्जांपल यही राइट्स कंपनी ने लिया हो, डेवलपमेंट राइट्स. सर, पर एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में सिर्फ इंडिविजुअल आता है, बाकी कोई नहीं आता.
yes, I agree. That is why I'm coming to this point कि ट्रस्ट ने डेवलपमेंट राइट्स जो लिया था सामने डेवलपमेंट से आई हैव टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट एज वेल बिकॉज वहां पे आपकी बात सही है कि यहाँ पे इंडिविजुअली कवर होते हैं ट्रस्ट कवर नहीं होता लेकिन जो डेवलपमेंट राइट के सामने कंसिडरेशन मिल रहा था दैट कंसिडरेशन वाज टू बी रिसीव्ड बाय द पर्सन हु हैज गिवन द डेवलपमेंट राइट्स सो ट्रस्ट के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है सो इफ यू आर द कंसल्टेंट ऑफ अ ट्रस्ट rest assured you are not required to pay GST under RCM or any other basis. Okay. The person who is getting or who is giving development rights is the person who might be liable to pay GST. Might be. हाँ. Again, right? Okay. ट्रस्ट का कोई इसमें लेना देना नहीं है ट्रस्ट तो कंसिडरेशन पे कर रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए बराबर है. सामने वाला अगर रजिस्टर्ड आदमी हो तो देयर कुड बी एन इशू. यस तो इश्यू उसके हाथ में आएगा कि डेवलपमेंट चार्जेस कंसिडरेशन है और डेवलपमेंट चार्जेस के कंसिडरेशन है बिजनेस के परव्यू में फॉल होता है 217 में कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं है 7(1) में फॉल हो रहा है सप्लाई माना जाएगा उसके हाथ ट्रस्ट हैज नथिंग टू डू विद इट डोंट वरी ऑन द साइड ऑफ ट्रस्ट today we are having WRC Vice WRC Treasurer Anand Jakotia. Now I request Anand sir to give his views on on behalf of WRC. Yeah. Thank you, Kiran bhai. First of all, I congratulate all the 3 branches, Akola, Nagar, and Jalgaon, for having so many joint events. They are working like a team. Team, one can say TEAM, together each achieves more. So in spite of this challenging time, all these branches are coming together and having mega events together. My dear friends, all 3 chairmen currently are friends who are working with me. We have worked together for many years. Jalaj and team from Akola, Kiran bhai and team from Nagar, Sagar and team from Jalgaon. First of all, thanks for inviting me to this GST conclave. I can see that you are having continuously joint events, direct tax conclave, indirect tax conclave. Both were successful events, and there were many other joint events. CSR activities are going in superb way. It's said that challenges make life interesting, and overcoming these challenges successfully make life meaningful. And जिस तरह आप काम कर रहे थे पहले उससे भी ज्यादा स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं अभी. आई कैन सी दैट ब्लड डोनेशन कैंप्स अभी चैलेंजिंग टाइम्स में भी अकोला ने और नगर ने लिए हैं. नगर had 493 blood bottles successfully. So big round of applause for your CSR activities as well. I am vice chairman of CSR committee at WRC right now. And my compliments for all other activities. Each week you are doing something that is superb, and the best of speakers you are getting, because you can get good number of participants in the joint event. Dhruvank, Parikh ji जैसे अच्छे speakers हमें मिल रहे हैं. Thanks Dhruvank ji for thank you sir, it's my pleasure. Yes sir. Even Jalgaon branch is having weekly webinars. रेरा पे लिया, HUF पे था, इनकम टैक्स पे हो ही रहे उनके webinars. तो इस प्रोसेस में इवन आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो WRC is always there. All the 4 office bearers are close friends of all these chairmen. I know Jalaj, Kiran bhai and Sagar ji are always in touch with all the 4 office bearers of WRC. और अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन में हम ज्यादा क्लोज आ गए. कंटिन्यूअस बात होती रहती है. हमारी भी जूम मीटिंग्स और अलग अलग फोरम पे मीटिंग्स हो रही है सारे चेयरमैन के साथ में. तो चेयरमैन से तो कंटिन्यूअस टच में है, लेकिन मेंबर्स आई कैन सी मेनी पास्ट चेयरमैन आर देयर राइट नाउ. This is a platform where we can discuss with you. If there are any challenges, any issues, please get in touch with us directly or through these chairmen, the leaders of your respective branches. And अभी हमारा help desk भी बना है WRC में, so please take benefit of that help desk. And
whatever queries you have. और ऐसे चैलेंजिंग टाइम में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादा हो जो हम होते नहीं है, whether it's relating to members or students. Please inform us, and we will resolve those at the max in 48 hours. So that is from my side, and all the best for your forthcoming events. Thanks again, all the three teams, for inviting me. Thank you, Anand bhai. Thank you very much. Yes, now I request Sagar Patni sir for the vote of thanks session. थैंक यू किरण सर। ये इस पेंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गया था, तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया और उसके थ्रू वेबिनार कंडक्ट करते रहे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक डिजिटल क्रांति ही साबित हुआ है इसमें, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग और सभी बातों का बेनिफिट हमें ऑफिस में बैठकर ही वेबिनार अटेंड करने मिल रहा है। ये 4 days जीएसटी कॉन्क्लेव के लिए मैं सबसे पहले तो अपने अकोला ब्रांच के चेयरमैन जलज भाईती सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने कि जलगांव ब्रांच को इसमें इन्वॉल्व किया। जलज सर ने काफी मेहनत किया इसमें, स्पीकर्स असाइन करना, टॉपिक सिलेक्ट करना, इवन फ्लायर भी जो डिजाइन किए हर ब्रांचेस के हिसाब से डिफरेंटली डिजाइन करके उन्होंने सबको सेंड किया। बारीकाई से हर चीज का उन्होंने काफी ध्यान रखा गया। मैं किरण सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। 4 दिन जीएसटी कॉन्क्लेव में टेक्निकली उन्होंने हर चीज बहुत अच्छी से मैनेज किया प्रॉपरली, कि हमें टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। आप जैसे कि जूम ऐप का लिंक तैयार किया, मेंबर्स लोगों का जो पेमेंट्स वगैरह आता है डिफरेंट ब्रांचेस का, प्रॉपरली उसको बाइफरगेट हुआ है, जिस तरह से जो ब्रांच का मेंबर का क्रेडिट वो ब्रांच को मिलना चाहिए। अभी ये वेबिनार 8 घंटे में किरण सर अपलोड कर देंगे यूट्यूब। तो थैंक यू किरण सर, आपने काफी एफर्ट्स लिए, जलज सर ने भी। और आज के जो टुडे स्पीकर्स जो थे हमारे पारक सर, ये लास्ट 24 आवर्स में इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना कंसेंट दिया और काफी एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर किया है उन्होंने, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, पारक सर। आनंद जाकोटी हमारे ट्रेजरर सर, उन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाल के हमें अपडेटेड हाइलाइट्स किए इसके ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे मेंबर्स सभी, जिन्होंने ये 4 day जीएसटी कॉन्क्लेव काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक सक्सेसफुल इसे बनाया। और मैं सभी मेंबर से इसी तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रांचेस की एक्टिविटी जो भी कंडक्ट होती है उसी में आप पूरी तरह से आपका योगदान देते रहिए, क्योंकि आपका अटेंडेंस हमें एक स्ट्रेंथ देता है और एनर्जी देता है कि टू परफॉर्म बेटर और एक उत्साह हमें क्रिएट करता है। तो थैंक यू वेरी मच सभी मेंबर्स के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक इम्पोर्टेंट एक बोलना चाहूंगा कि 14 अगस्त को जलगांव ब्रांच का एक वेबिनार है पेनल्टीज के ऊपर फॉर मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 270A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू जलगांव ब्रांच। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, थैंक यू किरण सर। Thank you. Bye. Dhruvank sir, excellent session we had. Thank you very much for accepting the invitation at the last moment and taking the flow Anytime. very smoothly. It was an excellent session. Thank you very much. Excellent.